I talk about, say, exchange of matter as well as energy. So open systems are those in which matter and energy both can be exchanged. If I talk about our own body, are we an open system or a closed system? Open system, because there is exchange of matter also, and there is constant exchange of energy also. So many processes, respiration and say digestion and other processes are happening simultaneously, that it's like an open exchange of matter as well as energy. So human body is an example of open system. Then we talk about, when we talk about closed system, say now I just cover it with the help of a lid and then start heating it. Then in that case, अगर मैंने उसको cover कर दिया, now I have reduced the exchange of matter. So there can only be exchange of energy with the surroundings. So then in that case, I will call it a closed system when I can exchange only, when there is possibility of exchanging only energy and no possibility of exchanging matter. So a closed system is the one which cannot exchange matter with the surroundings but can exchange energy. All right. Next, the third one is the isolated system. Now, say closed system ka example can be, say, whenever you take any liquid in a metallic vessel. Why am I saying metallic vessel? Because metals are conducting in nature. And when I'm saying metals are conducting in nature, that means they will easily allow the system to exchange energy in the form of heat or whatever. So you can easily, there can be exchange of energy only if the walls of the vessel are conducting in nature. So your example should be particular, that you have taken a closed vessel with metallic walls. Next, isolated system. An isolated system is the one in which neither matter nor energy can be exchanged. So it can neither exchange matter nor exchange energy. Both of the processes are prohibited, and this can happen only when you are taking your system in an isolated vessel or in an insulated say walls of the container should be insulated. So here you can actually make a note that it is necessary that your walls are insulated so that there is no exchange of energy as well with the surroundings. So that can be an example of an isolated system. And when we talk about the exchange of energy also in the open and closed system, here itself I can introduce the concept that you already must be knowing. That is the concept of endothermicity, and the concept of exothermicity. Endothermicity means energy is absorbed. And exothermic reaction, I mean, we'll talk about the exothermic in terms of enthalpy also. And exothermicity means energy is released. All right. Then when we talk about more kinds of systems, we can even have another demarcation of, say, a homogeneous system and a heterogeneous systems. This is also something that you have done. You've done that there are three types of solutions: true solution, colloidal solution, and a suspension. So you know what is the meaning of homogeneous and non-homogeneous. Homogeneous solutions are those which are uniform throughout, and heterogeneous solutions are those which are not uniform. Right? Now, say if I talk about homogeneous solution, I can talk about two miscible liquids. Now, when I'm talking about liquids also here, right here you can have an understanding that liquids are, the pair of liquids can either be totally miscible liquids, you can have partially miscible liquids, and you can have immiscible liquids. Here itself, when I'm talking about homogeneous system is the one which is uniform throughout. So if I talk about, say, a case where I have two miscible liquids, then they will be uniformly spreading in each other and the composition will be uniform throughout. In such a case, we say that the phases possessed, the number of phases possessed by the system is equal to 1. The system possesses only one phase. इसका मीनिंग अभी आगे जाकर और पढ़ोगे,
बट समझ लो कि जब भी एक ही मतलब टोटली मिक्स हो गया और हमें पता है दैट द कॉम्पोजिशन एट एनी पॉइंट of my solution is totally homogeneous, totally uniform, then in that case I will say that my system is only having one phase. Okay. The example of totally miscible can be water in any alcohol, right? Water and ethanol should be soluble, completely soluble with one another, right? Say partially miscible का example can be, partially miscible liquids क्या होते हैं कि एक particular temperature पे they are immiscible. Then I start heating it, they'll start getting mixed up with one another, and at one particular temperature they will be completely miscible also. Partially miscible का मतलब समझ में आया? ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा अंदर चला गया, थोड़ा थोड़ा बाहर. Partially miscible means depending upon their temperature conditions, they actually show miscibility accordingly. Neither completely miscible, they are not complete, neither nor completely immiscible. There is an intermediate stage depending upon the temperature. Example of partially miscible liquids can be phenol and water system. Phenol water system. Binary solutions की बात करें because I am saying talking about two solutions only. So whenever they are not miscible with one another, I would say that the system would be heterogeneous, the mixture would be uneven, right? And the number of phases would be equal to the number of immiscible characters in the system. So it may depend upon to be 2 or 1 depending upon what is the miscible character. This is generally not taken when we talk about it. And immiscible liquids can be oil and water. Just introduce this to you right here because it would have been done. Here the number of phases would definitely be greater than 1. So it will either be 2 or more. So homogeneous solutions are those solutions where the composition is uniform throughout. The number of phases will always be equal to 1. When I talk about heterogeneous solutions, there the number of phases will be greater than 1 and the composition will not be uniform. Next, you already know what are macroscopic systems. Macroscopic systems are where we talk about bulk or which are very large in nature, right? Large in size or large in nature. Then we can associate macroscopic properties with them. अब macroscopic properties क्या होती हैं? Macro मतलब बड़ा, properties मतलब which are associated with only बड़ा things. Okay, so here when I talk about macroscopic properties, last time we studied viscosity and surface tension also. They are also macroscopic properties because whenever you take collection of different particles, जब हम एक एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को ऐड करके टोटलिटी में बता सकते हैं बल्क की प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया? ये नहीं कि यू हैव वाटर और यू हैव एनी अदर लिक्विड से ABC, उसका आपने बताया कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क क्योंकि ये इतना ज्यादा है. नहीं, that macroscopic property is the sum of the individual properties of each and every particle which is there in that solution or there in that particular system. Okay, so that is macroscopic property. And example of macroscopic properties can be your surface tension, viscosity, you can have your refractive index, density, pressure, temperature, volume, all these can be regarded as your macroscopic properties to describe your macroscopic systems. And last time we had also seen the degrees of freedom that I am not throwing light upon. You know that degrees of freedom are the minimum number of variables. और वेरिएबल का मतलब जो वेरी हो सकते हैं. कौन से वेरिएबल्स होते हैं जनरली जो हम पढ़ते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर व्हेन वी वर डूइंग गैसेस. सो दिस ऑल यू अंडरस्टैंड. Then if I am talking about equilibrium, say equilibrium state also can be of different types. If I am talking about say thermodynamic equilibriums, if macroscopic properties of the system in various phases do not undergo any changes. If I talk about thermodynamic equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता है, थर्मोडायनेमिक का मतलब भी अब पता है. थर्मोडायनेमिक इज रिलेटेड टू योर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो अगर हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग, then that means my system is at thermodynamic equilibrium.
Now, again in thermodynamic equilibrium, I have different types of equilibrium. जो नाम से ही they are revealing as to what they are. I can have thermal equilibrium. I can have, let me talk about mechanical first. I can have mechanical equilibrium. Then I can also have chemical equilibrium. And let me not just talk about any other. Okay. I repeat, thermodynamic, a state is said to be in thermodynamic equilibrium whenever we say that your thermodynamic properties, what are those properties now? Macroscopic properties are not changing at all. They are just remaining as they are. ठीक है उसमें thermal equilibrium जो है that is when your temperature is not changing anymore. So it is that equilibrium which has been attained when there is no more temperature exchange. Got it? When you mix hot and cold water, that is, you can attain a state of thermal equilibrium when there is no more exchange of temperature between the hot and cold water, but there will be exchange with the surroundings. Mind it, unless and until it is an isolated system. So now here in this case, there is, we say that thermal equilibrium is when there is no flow of heat, when the system temperature remains constant. So here we can essentially say that this is the state, thermal equilibrium state is the one where temperature is finally constant and there is no more exchange of heat. Mechanical equilibrium is when you do not need to do any more work done, when no more work is to be done. When no more work is to be done and on the system. Mechanical equilibrium means that if I am pushing a wall, then that means the wall is now in mechanical equilibrium because it just need not have any changes or exchanges with the surroundings. So mechanical equilibrium is where, say, basically what we have is that no work needs to be exchanged between the two possibilities which we have. And this happens only when your pressure is a constant. So here you have to remember that this happens when your pressure finally becomes a constant. And chemical equilibrium means when now, chemical equilibrium means जब left hand side और right hand side मेरे reaction का बिल्कुल stable है, neither A and B will get converted to C and D anymore and C and D will get converted to A and B anymore. जितने हैं उतने के उतने ही हैं. That means there is no change in chemical composition. Here there is no change in chemical composition. And this is what we study by and large in your chemical equilibrium. This is a separate branch that you are going to do. This is generally represented by this symbol. Here itself, I think I can define what is the meaning of reversible process. This is another class of vocabulary that we do in this. And irreversible process. You can have reversible processes as well as irreversible processes. In reversible processes मतलब my system is in some kind of this form कि अगर वो forward जा रहा है तो it has the capability of coming backwards also. So when it is defined as this is that reversible processes are those in which the driving force is infinitesimally smaller. If I represent it like this, in which the driving force, मतलब अगर मैं chemical process की बात करूँ to be reversible, then in that case A plus B forming C plus D. I'm saying that अभी मैंने A and B mix ही करा है with the required conditions, तो immediately C and D will start getting formed. और जैसे ही C and D बनेंगे, वैसे ही A and B वो वापस बनाना शुरू कर देंगे. Got the point? So a reversible process is the one in which the driving force is infinitesimally smaller or larger than the opposing force. So driving मतलब the one which is forming the products and opposing force मतलब जो वापस reactants बना रहे. You will find this language in all the books. Reversible process is the one in which the driving force is infinitesimally larger than the opposing force. So you have to understand that driving and opposing are almost equivalent. Those are the reversible processes. Or irreversible processes are spontaneous ones. Irreversible मतलब एक बार जो चीज बन गई, वो बस बन गई. All right. Let me take E here.
Irreversible process मतलब whatever has been formed will not revert back. और ये कब होता है ऐसा? When say whatever products you had, उनका energy is lost by some dissipation of heat energy. This reaction may be associated with some heat energy. अगर ये heat energy थी, या कई बार हमारे पास gases भी होती हैं, तो gases, what happens to the gases? They get expelled in air. So when you do not have requisite amount of the products to get back to the reactants, तो उस केस में भी reaction नहीं होगा. So irreversible, by and large, majority, more than 99% of the reactions which occur naturally are irreversible. And reversible are the ones which are really, I mean, they're not really fast. They take time to happen. And then in case of reversible processes, one thing more that you need to understand is, if I talk about the work done in both the processes, which will be associated with more work? Reversible, right? So always remember that by and large, for the general cases, you have the work reversible to be greater than work irreversible only. We'll throw more light on it as we proceed. All right, then when I'm talking about, say, properties, in properties also I need to understand two types are there. One is you have the intensive properties, and the other that you can talk about is extensive properties. अब याद रखने के लिए, you know that they are associated with the amount of substance, right? Intensive, in, so they are independent of the mass of the system, independent of the amount of the system, because there is a lot of confusion to remember. Intensive properties are those which are independent. Remember the in and in factor. Intensive properties are those which are independent of the amount of the matter of the substance. Like for example, if I say for intensive property, temperature, pressure, refractive index, you can have viscosity, surface tension, then you can have specific heat, etc. You can go through more properties in order to understand whether they are intensive or extensive. Intensive का मतलब समझ में आ गया? Intensive मतलब the ones which are independent of the amount of the substance. Okay, now here in this case, temperature you know is independent, pressure is independent, refractive index, surface tension, viscosity, then specific heat. What is specific heat? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius. So in that case, what we are doing is we are omitting out the gram thing because we are keeping it fixed. So irrespective of that, whatever heat capacity you possess, that's your specific heat. So it becomes independent of mass. So if I talk about heat capacity will then be extensive because it will depend upon the mass of the substance. So extensive properties are those properties which depend upon the mass of the amount of the substance. Like for example, you have heat capacity, you have mass, volume, etc. Mass, volume, say you can have other factors as well. And then next we talk about the different thermodynamic processes that we have. We can also talk about the different thermodynamic processes. This is something that you already can actually give the names to now, because the different processes are, you will know the meaning, I'm sure. Isothermal processes, adiabatic processes, adiabatic may be new. Then you have isochoric and you have isobaric process. And now you know that when I talk about isothermal processes, isothermal are the one in which your temperature is constant. So that means dT is equal to 0. When I talk about adiabatic processes are the ones in which my heat remains a constant, right? When I am talking about an isochoric, then volume is a constant.
And when I talk about isobaric, then in that case, pressure is a constant. So you know that accordingly, your dt, dq, dv, and dp, as I've written on the board, will be a constant, right? Then here, what we have basically is like, please make sure that you are thorough with this basic vocabulary, because only with the help of that you will be able to grasp in and understand things accordingly. So I'm just rubbing it off. Different types of thermal equilibrium. Thermodynamic equilibrium मतलब जब macroscopic properties जो मेरी है, pressure, volume, temperature, सब constant है, तो I would say that my system is in thermodynamic equilibrium. But thermodynamic equilibrium is also of different types. What are those? You have thermal equilibrium. Thermal equilibrium मतलब when your no exchange of heat is happening. That means your temperature is now constant. What is your mechanical equilibrium? When no more work needs to be done, in that case, what is constant? Pressure is constant. Then we say that a chemical equilibrium is one when I don't need any change in composition of the system. So then that means that my system is in equilibrium when there is no more change of composition, and they are said to be in chemical equilibrium. When I talk about equilibrium, I can also understand different types of processes. Like for example, I can have a reversible process and an irreversible process. Acha, reversible process mein what is the speciality? That the driving force is just very infinitesimally smaller than your opposing force. So I can say that the driving force and the opposing forces are almost same. Then in irreversible process, of course, your driving force is infinitesimally larger than the opposing force. That is why the reaction is just proceeding in one direction. And this is what happens in natural processes by and large. And the work done, the important thing that I told you here was that the work done in a reversible process is much larger than the work done in an irreversible process. Then in order to understand the macroscopic properties that we have been talking till now, they can be divided into two: intensive properties and extensive properties. Intensive कौन सी? Independent of amount of substance. कौन सी हो सकती है? Pressure, temperature, they are just independent. Heat capacity, is it independent or intensive or extensive? Extensive. Specific heat, intensive. When I talk about surface tension, viscosity, अब आप ये कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए, they are intensive. And extensive में wherever you find that there is any dependence of mass, then you would say that it is an extensive property. Then when we talk about the processes also, we say that in talking about the processes, that you can have now different types of processes depending upon which variable is constant. Agar temperature constant, तो isothermal, pressure constant, isobaric, volume constant, isochoric, and if heat constant, adiabatic. Adiabatic, and you generally represent heat by Q. So you say dq is equal to 0 there. Okay, from the basics that we have just gathered, we talked about thermal equilibrium as well. So now we are in a position to talk about the 0th law of thermodynamics. 0th law of thermodynamics, let me tell you, all the laws are very easy to understand. 0th being the simplest of all, it states that if I have, say, three systems, if I have, say, three systems, A, B, and C, and if, say, A is in equilibrium with C thermally, if A is in thermal equilibrium with C, and B is also in thermal equilibrium with C, then the 0th law states that A and B are also in thermal equilibrium with one another. So, if you have to put it in words, 0th law of thermodynamics states that if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are said to be in thermal equilibrium with each other. This is your simple 0th law of thermodynamics from where we begin. Okay? 0th law of thermodynamics states that if two systems are in thermodynamic equilibrium with the third system, then those two systems are said to be in equilibrium with one another. Then we proceed one step further to understand another terminology in our thermodynamics, which is known as internal energy. In many of the books, internal energy is written as E. It is also written as U.
Okay, it is nothing but it is the total energy of the system. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूटिंग टू योर इंटरनल एनर्जी वॉट एवर एनर्जी इन विच एवर फॉर्म यू हैव द एनर्जी विच इज देयर इन द सिस्टम इज नथिंग बट योर internal energy only. Say it can be a combination of so it can be say chemical energy, it can be electrical energy, it can be mechanical energy, or it can be any other form of energy possessed by the system. When may it change? It may change when when there is a heat exchange. That means heat exchange कैसे होगा? Either heat passes in or it goes out. When work is done on the system or by the system. All right? Or when you say there is exchange of matter also. When matter enters or leaves the system. I repeat it again. Now we are talking about a new term that is internal energy. Internal का मतलब जो भी अंदर है, ठीक है? And energy, because let me tell you, अभी हम और different types of energies करेंगे, so there may be confusion. So you need to understand, this is basically the internal energy, which is nothing but sum of all the energies which are possessed by the system within the system. And how can it change? जब मैं system के अंदर changes लाऊंगी तभी internal energy change होगी. By and large, when I'll do some work on the system, or I bring about any heat exchange, heat से heat energy निकल जाएगी. और यहीं पे मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. इंटरनल एनर्जी समझ आ गई, सारी एनर्जीज को मिक्स करके वट एवर यू गेट इज इंटरनल एनर्जी. Another term that we will just do is enthalpy. Enthalpy is some kind of heat energy. अब इसमें Q करेंगे हम. Q. अब enthalpy क्या होता है? That is energy utilized from within the system that can be exchanged as heat energy with the surroundings. कुछ समझ में आया? अगर heat energy system के अंदर है तो it is a part of your internal energy only. Let me just explain this first. Now what you have here, the change in system can be brought about by doing work or transfer of energy, as I stated. So here I can write that this U is nothing but the change in internal energy can be related to heat and work. The change in internal energy मतलब जैसे मान लो मेरा U2 final state है और U1 initial state था, तो that will depend upon this heat energy and the work done. What is this heat energy? अगर ये heat energy is, if it is the heat given out, then it will be negative. That means if it is the heat released, then in that case it will be negative. And if it is the heat absorbed, then in that case it will be positive. That thing clear? Right? And again, the work done also will have a sign convention. Now please be careful, it is very simple as it looks. And this is the quantitative relationship for the first law also. But here you need to understand that if work is done by the system, then it is negative. All right? And if work is done on the system, very well. All of you all seem to know this. But then whenever we write work done, how do, अच्छा work done by the system means अगर मान लो मेरा एक ये cylindrical vessel मैंने लिया है, I have put a piston on top of it. So अगर ये expand कर रहा है तो क्या इसको बोलोगे कि work is done by the system or on the system? By the system. And when there is some kind of a compression, that means work is done on the system. That thing is clear to you. Now you know what is work. Simple normal science that you know, that is force into distance. Say any distance L, force into distance. Now if I, what is force in terms of pressure? We are talking about pressure in and pressure out. So in terms of pressure, what is pressure? Force upon area. Okay? So that means my force will be what? Pressure into area. So that means this is
pressure into area into L. So it can be the change in the volume in totality. Force into, अगर मैं इसको dl लिखूं, अगर मान लो length is getting changed without the area cross section getting changed. Now here in this case there will be change in volume. Clear? So in that case I will write it as P delta V. Let me just put it as delta L and delta, because delta is in slightly bigger terms. D is like the infinitesimal change whenever we write dV. So here in this case it will be P delta V. अब सिर्फ ध्यान से इधर देखना, अगर मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो देन दैट मीन्स P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी नेगेटिव. तो टोटल वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव. इसीलिए बाय कन्वेंशन हम हमेशा वर्क डन को लिखते हैं माइनस P डेल्टा V, ताकि जब हम उसको एक्चुअल में अप्लाई करें फॉर कंप्रेशन इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड फॉर एक्सपेंशन इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव ओनली. तो इस वाले टर्म में Q प्लस W होल्ड्स इट्स मीनिंग, लेकिन W का फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस P डेल्टा V. Minus is a sign convention which makes your work done positive in case of work done on the system and it makes it negative in case of work done by the system. I think that's clear to everyone. So you have to remember this, that negative sign is, ये नहीं है कि अगर work done on the system है तो minus sign आप लगाओगे ही नहीं, फिर final answer में गड़बड़ आ जाएगी. So remember that this is the quantitative expression for the first law of thermodynamics. And let me tell you, for a cyclical process, the change in internal energy is zero. If I talk about any cyclical process, then in that case, my pressure was, then in that case, I would say that for any cyclical work done, I would say that my internal energy, cyclical work is generally shown by integral with a circle here. My change in internal energy is equal to 0. So then that means dq plus dw is equal to 0. I have written my first law of thermodynamics as this, and this is also known as the law of conservation of energy. ये तो सबको याद होगा. Law of conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed, but it can change from one form of energy to another. It also means that first law also states that the energy of an isolated system remains constant. Energy of an isolated system में ना तो matter exchange हो रहा है ना energy हो रही है, तो इसका मतलब उसकी energy जितनी है वो constant रहेगी. और एक और चीज जो मैंने बताई है, that the total internal energy for a cyclical transformation or cyclical process is equal to 0. So अगर मैं first law को sum करूं, if I sum up the first law of thermodynamics, you have to remember that what am I stating is delta U is equal to Q plus W. If I talk about infinitesimal change of work and heat, then it can also be written as du is equal to dq plus dw. And remember here that for a cyclic process, du is equal to 0. The net du will be equal to 0, which would imply that your dq will be equal to minus of dw. dq will be equal to minus of dw. Okay. So remember the sign conventions also now. Now there is also an important law that you need to remember, and that is known as the Joule's law. We are not going into the process or the derivation of the final expression, but it is a very important law which talks about the dependence of internal energy on temperature.
Please understand. Now we have done zeroth law of thermodynamics. What is zeroth law? It basically talks about thermal equilibrium. याद रखना zeroth law बोलते ही thermal equilibrium दिमाग में आना चाहिए. That if you have two systems in thermal equilibrium with a third system, then those two systems are also in thermal equilibrium with each other. Then the first law of thermodynamics, very simple, law of conservation of energy. सबसे simple statement तो यही है. Mathematically, what is the expression? Delta U is equal to Q plus W. अब ये U क्या है? Internal energy. What is your internal energy? It is the total sum of all the energies which are there in your system. How can it change? It can change either by the heat exchange or when work is done. When heat is given out by the system, then it is minus, Q is minus. When heat is absorbed by the system, then Q is positive. When work is done by the system, it is negative. When work is done on the system, it is positive. What is the formula of the work done? Minus P delta V. Why that minus sign? It is by convention. Compression में net W will be equal to positive, क्योंकि compression मतलब work is done on the system. Compress कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब work is done on the system. This is a piston. ये मेरा cylinder है. You have gases in it. All right, gas mixture whatever. You are compressing it, so work is done on the system. तो उस केस में compression में my W will be positive. Expansion में by and large my W will be negative. But the basic expressions that you've learned for delta U is equal to Q plus W hold. Another thing, du for a cyclic process is 0. Now we are going to talk about another law which states that Joule's law, it states that जब हम ideal Joule ने एक experiment किया which was related to temperature changes for an ideal gas. Okay, what he found was that U is a function of temperature only. Internal energy, मतलब समझा रही हूँ, internal energy is a function of temperature alone for ideal gases. Not for non-ideal gases, because then Thomson also did another experiment which related it to the real gases as well. Ideal gases कौन सी? Which obey Charles law, Gay-Lussac's law, Boyle's law under all conditions of temperature and pressure. Okay, so now here it states that whenever I talk about an ideal gas, that means उसका PV is equal to nRT. It will behave the follow the ideal gas equation. There U is just a function of temperature. मतलब अगर temperature change होगा तो U change होगा, अगर temperature नहीं change होगा तो U भी नहीं change होगा. So it means from here you can state that for an ideal gas, if your delta T or dt is equal to 0, this would mean that your delta U or du is equal to 0. ये चीज सिर्फ याद रखने के लिए that we have done one of the laws which is Joule's law, which states that internal energy is a function of temperature alone for ideal gases. Because questions based on this have been asked which are very simple. And here you just have to remember that means if there is no temperature change, my internal energy will also not change. Then now what we can do is another thing is like we can define some types of functions. We can have state functions and we can have path functions. ठीक है, अब हमने U की बात कर ली, जैसे U is equal to Q plus W. If I am saying U2 minus U1 can be defined, say delta U is equal to Q plus W. So this U2 minus U1, here U is your state function. Why am I saying that it is a state function? Just clearly note here, state function होते क्या हैं? जो मेरे initial state और final state पे depend करते हैं, and they do not depend upon the path followed. Okay? State functions are those functions which depend only on the initial and the final step and do not depend upon the path followed. But these two are path functions. That means their values depend upon the path followed. Let me just take an example. Path function का मतलब समझ में आया? These are those properties which will depend upon how your 1 has gone to 2.
Like for example, if I talk about the pressure volume work alone, you know that work done can be computed from the area under the curve here. जो भी मेरा curve आएगा, मान लो if the curve is like this, or if the work done has been done like this, 1 to 1 dash to 2, and यहाँ पे 1 to 2, I am keeping the points 1 and 2 the same, okay? That means यहाँ पे जो मेरा coordinate है P1 V1 और यहाँ पे P2 V2 और यहाँ पे sorry V1 P1 और यहाँ पे V2 P2 are the same as here in this graph. The only thing is that the path followed is different. So how do we calculate the work done from the PV graph? It is the area under the graph. और अगर area इसके अंदर निकालेंगे तो it is this area. ठीक है? It is this area. और अगर इसके अंदर निकालेंगे तो it is this area. जबकि इधर भी 1 से 2 पे जा रहा है, इधर भी 1 से 2 पे जा रहा है, but the area under the curve will now be different. So इसका मतलब work done does not just simply depend upon the 1 and 2. It depends upon how it has gone to 2. Understood? So it depends upon the path followed. ये ऐसे भी जा सकता था. See, if I have pressure and I have volume here. So had it gone like this, say this is state 1 and say this is state 2, then in that case the area under the curve would have been this. तीनों cases में ही the situation is going from one state to the other state, and is the first and the last state is the same, but you see that the area under the curve is different in all these cases. So from here we can state that W, Q are path functions, and this is generally an experimental observation as to how to get to know which is a state function and which is a path function. And there are ways of coming at it also, which you will do probably in your higher studies. Now, say we've talked about U to be equal to, what is it? We have seen that delta U is equal to Q plus W. क्या है ये? First law of thermodynamics. Okay, I know that my work done is minus P delta V, P delta V, right? Now here, if I talk about the internal energy at constant volume, if I talk about the internal energy at constant volume, then delta U will be equal to Q V. ये V मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा volume is constant, and P delta V will become 0 because delta V is 0. This is the case at constant volume. If I talk of the change in internal energy at constant pressure, then in that case, at constant pressure, then in that case, what will I have? I will have, say, U2 minus U1, delta U यही होता है, U2 minus U1 is equal to QP now, because pressure is constant, plus W होता है, so that is minus P of V2 minus V1, क्योंकि अब volume constant नहीं है. I can take these terms if I open up. See, this will be QP minus PV2 plus PV1, right? Let QP be on one side, take the other terms on the other side. It will be U2 plus PV2, right? Minus U1 plus PV1 is equal to QP. Just carefully look at it. What we have done now is we have just taken, we were just trying to find out कि अगर constant volume रखेंगे तो क्या होगा, constant pressure रखेंगे तो क्या होगा. इससे क्या पता चलता है कि हमारी अगर एक property है तो वो दूसरी property से हम link कर सकते हैं. So that means if my volume is constant, I can directly state that whatever is the heat content in the system is your internal energy. If my volume is constant. If volume is not constant, pressure is constant, then in that case, this is the situation.
राइट हमने सिर्फ टर्म्स को इस तरफ ले आए हैं. नाउ हियर we can define an additional thermodynamic term which is enthalpy. And how can we define enthalpy? Enthalpy is nothing but it is the energy that can be actually that is stored within the substance or system that is available for conversion into heat. हमने यहाँ से यूज करके एक नया टर्म डिफाइन करा है which is enthalpy. And let me tell you, enthalpy means heat only. लेकिन it is that heat content of the system that can be utilized from within the system to get converted into heat. It is that energy. Internal energy हम सबको पता है. What is internal energy? Sum total of all the energies which are there within your system. Now we are talking about enthalpy, which is the energy stored within the system that can actually be that is available for conversion into heat. अब मुझे हीट में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो क्या हो सकती है? टोटल एनर्जी जो अंदर है वो प्लस द प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हम कर रहे हैं. एंथैल्पी का मतलब समझ लो, बिकॉज दिस एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हीट. एंथैल्पी को हीट भी बहुत जगह पे यू विल फाइंड आउट द हीट एनर्जी चेंज, एंथैल्पी एनर्जी चेंज. They are more or less the same, but you need to understand the difference between this heat energy and this heat energy. This is that energy within the substance that is available for conversion into heat. तो वो क्या है? एक तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम में ऑलरेडी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू हीट, प्लस सम वर्क दैट वी आर डूइंग ऑन और बाय द सिस्टम. सो प्लस पीवी. So utilizing that, we come now, we define a new state. Acha, why is this a state function? This enthalpy is also a state function because it depends upon U, P and V, और ये तीनों भी state function है. U, B, P, B, V, B, because all these three are state functions. Therefore, my H is also a state function. And this is clear from here also, because now my H2 minus H1 is equal to QP. So this implies that my delta H is equal to QP. Now, what did we see from the first law till now? We have seen that the mathematical expression is majorly important. The statement you all can remember, it is the law of conservation of heat energy. Mathematical expression is delta U is equal to Q plus W. W is equal to minus P delta V. Delta U is equal to 0 for cyclical process. Delta U is also equal to 0 when your delta T is equal to 0. Which law? Joule's law. All right. And then we also saw that our delta U is equal to QV at constant volume. क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो बचा सिर्फ Q, so delta U is equal to Q. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो QP is equal to delta H. क्या होता है H? H is nothing but U plus PV. Internal energy plus मेरा प्रेशर वॉल्यूम, right? Pressure into volume. Now from here, we also can talk about one more thing that you know that हमने अभी अभी देखा H is equal to U plus PV. And if it is for an ideal gas, this PV can also be written as nRT. Please remember this also. क्योंकि formula में sometimes when you have to calculate your delta H will be equal to delta U plus delta of PV. Have you done differentiation on maths? So delta of PV can be P delta V plus V delta P, right? So here this is nothing but अगर मैं delta H लगा रही हूँ तो it will be delta U plus delta of PV, which can be delta U plus P delta V plus V delta P. And if it is at constant pressure, you know at constant pressure, my delta H is equal to QP. ये हमने अभी अभी देखा delta H first law से ही delta H is equal to QP, which will be equal to delta U plus P delta V. क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, delta P will be equal to 0. And from here itself, I can just quickly define the
heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure. We have already discussed heat capacities before. What is heat capacity? The amount of heat required to raise, so the amount of heat requires to raise the temperature of a certain amount, depending upon what are you talking about, specific heat or heat capacity, by 1 degree Celsius. So here this was nothing but dQV by dt, heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. This was dQp by dt. अब मेरा dQv क्या था? du by dt, ठीक है, du by dt at constant volume. और ये क्या था? dQp क्या है? अभी अभी हमने देखा what is your QP? It is dH. So this will be at constant volume. Pressure. Sorry. And again, let me just remind you, what is your Cp by Cv? That is equal to gamma. And if you consider your gamma from here, your gamma can also be dH by du. ध्यान से देखो, it can also be delta H by delta U also. तो अगर आपके पास enthalpy और energy, internal energy की information है, then in that case you can calculate your gamma from there also. And I told you that last time मैंने आपको बताया था Cp Cv कैसे calculate करते हैं. Law of equipartition of energy करा था हमने. 7/2R, 5/2R, कुछ याद है या जंग लग गया? अभी you have to provide some oiling to it. Now what do you have here? What the value for monoatomic gases was 1.67. Then you can remember these values: monoatomic, diatomic, triatomic. These are important from your numerical point of view also. How did we do that? Let me just remind you. Cp was coming out to be, say, if this was 5/2R, this was 7/2R. फिर RR cancel, and how did we get this R? वो total number of degrees of freedom निकाल के हमने energy calculate करी थी और फिर बोला था Cv is equal to d of energy by dt, और फिर हमने निकाला था. For all those of you who have forgotten, please revise it again. Okay, please remember the gamma values. They're not that difficult to remember. पर अगर Cp और Cv की वैल्यू दे रखी है, then you can calculate it from there only. Cp by Cv. Otherwise for monoatomic, diatomic, triatomic, आप degrees of freedom निकाल सकते हो कि monoatomic की कितने degrees of freedom. What is the total degrees of freedom का formula? That was 3n, जिसमें से translational, rotational और vibrational थे. Translational हमेशा 3 होंगे, rotational 2 या 3 और vibrational whatever was left over, -5 या -6, 3n -5 या 3n -6. तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक की तो आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी मूव ऑन नाउ with is we'll do some formulae quickly for the isothermal expansion. हमने अभी तक सिर्फ zeroth law और first law करा है, जिसके सारे implications you have understood from the formula itself. What have we done till now? Zeroth law तो easy था to understand. First law is delta U is equal to Q plus W, where we have seen delta U is equal to QV and delta H is equal to QP. This can be written as CV dt. लिख सकते हैं CV was, or let me just write it. You can write it as CV dt. CV delta T लिख देती हूँ उसको, क्योंकि डेल्टा इधर लिखा है ना. ऐसे ही delta H can also be written as CP delta T. So all these formula are important, let me tell you. And also we have seen that gamma, which is equal to Cp upon Cv, can also be written as delta H upon delta U, क्योंकि इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो you will get your delta H by delta U only from here. Also you have to remember that H is equal to Q plus PV, and here for ideal gases PV is equal to nRT. और हमने क्या करा है, एक जूल्स लॉ करा है जिसमें हमें पता चला है कि U is a function of temperature only, and this is also for ideal gases and this is also for ideal gases. And we've also seen that for a cyclical process
du is equal to 0. अभी तक हमने फर्स्ट लॉ में ये सब करा है. These are only the simple formulae that you can easily remember. Now we just move on to isothermal expansion. सिर्फ इस प्रोसेस को समझना, उसके बाद we'll move on with numericals. Isothermal expansion. Say of an ideal gas only. We have done ideal gases in details, so it is better that we proceed for the isothermal expansion of ideal gases only. अब अगर मतलब समझो इसका, isothermal expansion. Isothermal means what is constant? Temperature constant. ठीक है, that means delta T is equal to 0. ये तो याद रखोगे. Isothermal. Okay, now expansion मेरे दो टाइप के हो सकते हैं. Please look carefully onto the board only. I want attention only for 5 minutes, so that you remember the formula and how we have arrived at it. क्योंकि बाकी सब के हम फॉर्मूले नहीं, वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला विल, आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला इटसेल्फ. आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट का एक्सपेंशन, मतलब यू नो दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम. पर हम कंप्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सपेंशन का होगा उसका उल्टा ही विल बी देयर फॉर द compression. Now delta T is equal to 0 here. There can be two types of processes. One, you know, is reversible process, and the other, you know, is irreversible process. Very good. Now when we talk about the reversible process, in the reversible process, I know I am talking about an ideal gas. ठीक है, आइडियल गैस का मतलब है मैं अपना जूल्स लॉ लगा सकती हूँ. दैट मीन्स माई इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. मेरा डेल्टा टी क्या है? 0. आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका मतलब मेरा डेल्टा यू क्या है? 0. ठीक है, अब मेरा डेल्टा यू अगर 0 है तो मेरा डेल्टा एच क्या है? दैट इज इक्वल टू यू प्लस PV का डेल्टा, because H is equal to U plus PV. What is my PV for an ideal gas? nRT for 1 mole. RT, just generalizing. ठीक है, अब अगर I open it up, डेल्टा U plus R डेल्टा T. अब देखो डेल्टा U क्या है? 0. डेल्टा T क्या है? तो डेल्टा H क्या हो गया? 0. ठीक है, तो डेल्टा H will also be 0. What is delta U equal to by first law? Q plus W. डेल्टा U क्या है? 0. तो मेरा Q क्या है? माइनस W. ठीक है, अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो. What is my work done? Minus P delta V. Let me just talk about now this. Let the small amount of work done in expansion be equal to minus PdV. ये जो P है ये मैं external pressure की बात कर रही हूँ ना, the pressure that is applied onto the system. तभी we are talking about the work done on the system or by the system according to that. So if I am talking about say some kind of an expansion, then let the change in pressure be, इसका मतलब external थोड़ा सा कम हो रहा है तभी expansion हो रहा है. तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम होगा तभी तो एक्सपैंड होगा, क्योंकि एक्सटर्नल को मेरे को कम करना है तो मेरे को अंदर से बढ़ाना पड़ेगा. सो दैट मीन्स इट विल बी सम P एक्सटर्नल माइनस dP इंटू dV. ये नई स्टेप भी समझ में आएगा तो भी ओमिट इट. खोलूंगी तो क्या मिलेगा? माइनस PdV प्लस dP इंटू dV. dP बहुत छोटा, dV बहुत छोटा, तो वैसे भी ये इग्नोर ही हो जाएगा. So by and large, what I get is minus P external dV as the work done only. ये सिर्फ मैंने इसीलिए लिखा है because many of you may have a doubt कि P external में हम उसको change को क्यों नहीं consider कर रहे. Pressure थोड़ा सा, so there will be an infinitesimal. If I do an infinitesimal amount of work, then there will be infinitesimal amount of change in the pressure also, and that pressure is negligible, so it gets ignored. क्योंकि dP into dV will again be very small, so we ignore it. So now here at this point, what we basically see is that dW is equal to minus P external dV. कौन सा process है? Reversible. Reversible में you know that
The pressures now will be comparable. Reversible process क्या, जिसमें forward and backward direction will be almost same. So this P external will be equal to the pressure of the gas inside. और अंदर कौन सी गैस है? आइडियल गैस. आइडियल गैस का मतलब मैं इसको P आइडियल से रिप्लेस कर सकती हूँ, ऑलमोस्ट सेम होगा. What is my P ideal? RT by V. So I can write it as for 1 mole to take it. So RT by V dV. ठीक है, इंटीग्रेशन भी किया अभी. So now here in this case, if I want to have the work done, then in that case I'll simply integrate it. ये छोटा work done I want to integrate and find out कि what is the total work done. That work done will be equal to what is integration of dV by V, ln V plus C. हम इसमें constant नहीं लेते, but this is ln V. So और फिर limits लगाएंगे, वॉल्यूम V1 से V2 पे जा रहा है. So what will that be? That will be equal to minus RT ln of V2 by V1. करके देख लो, ln of V आएगा, फिर लिमिट्स लगाएंगे तो it will be ln of V2 minus ln of V1, which will finally give my work done to be equal to this. And अगर मेरा work done आ गया तो then the work done is equal to minus of Q only. So जो भी मेरा अगर work done आ गया, so Q will be minus of W of that. And here अगर ln हटाना है, log में लिखना है, natural log को log to the base 10 में, so then we'll write it as minus 2.303 RT log V2 by V1. Please just sum it up again. So what did we get from here? The information for the reversible. Highlights देखो, isothermal expansion है. Isothermal का मतलब अगर डेल्टा T 0 for an ideal gas तो डेल्टा U 0 तो डेल्टा H 0. अगर डेल्टा H 0 तो and what is the final formula? Derivation course में नहीं है, you don't need to do it, but still you should know how we arrived at it. इसीलिए I told you for only this one. So what is the work done equal to? Minus RT ln of V2 by V1, or you can also write it as minus 2.303 RT log V2 by V1. Clear everyone? Please remember this. Just quickly memorize it. Then we come on to irreversible. Just look here. For irreversible, I'll give you 2 minutes to copy it down. Just look here. For the irreversible, what we have now is irreversible में ना दो type के possibilities हैं. एक intermediate expansion, which is not that expensive कि बिल्कुल अच्छा, और एक फ्री एक्सपेंशन. अब फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर, बिल्कुल फ्री एक्सपेंशन मतलब सिस्टम एक्सपैंड हुए जा रहा है. इसका मतलब ऊपर का प्रेशर कितना है? वेरी गुड. अगर फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. हमने जनरली देख लिया डेल्टा टी इसमें 0 है इस केस में, तो डेल्टा यू भी 0 है और फिर डेल्टा एच भी 0 है. ये तो मेरा किसके लिए हो गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अगर मेरे ये सब चीजें 0 हैं तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 है, तो मेरा वर्क डन वाज व्हाट? इट वाज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. तो मेरा वर्क डन क्या हो गया? 0. और अगर वर्क डन 0 तो मेरा क्यू क्या हो गया? 0. तो याद रखना आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में एवरीथिंग इज 0. डेल्टा यू 0, डेल्टा एच 0, डेल्टा टी 0, क्यू 0, डब्ल्यू 0. और रिवर्सिबल में W was minus nRT 2.303 log V2 by V1. लेकिन इस केस में वो 0. अब यहाँ पे ये सब चीजें तो आर होल्डिंग फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन ओनली. इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर टोटली 0 नहीं है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, तभी इंटरमीडिएट एक्सपेंशन हो रहा है. तो इस केस में माय वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी dW. Right? Now here, if it is minus P external dV, तो यहाँ पे मैं P external को replace नहीं कर सकती P ideal से. Why? Because now it is not comparable to my pressure of the gas. What is more? Pressure of the gas is more or external pressure is more? Pressure of the gas. It's intermediate expansion. So now here, then in that case I cannot replace it. तो ना से what do we have? Integrate कर देते हैं. What is integration of dx? X
लिमिट्स लगाएंगे V1 V2 इसकी, so it will be W will be equal to minus P of V2 minus V1. Simple. Q is equal to minus W. Okay, I give you exactly 1 minute's time and just revise the basic formulae. Can I just rub the board? In the meantime, I'll just give you a summary of this and you can record it simultaneously in your notebooks. What we have here is, in the isothermal expansion of an ideal gas isothermal expansion means delta T is equal to 0. अगर हमारा delta T is 0, then that means delta U is equal to 0 from Joule's law, where we see that U is only a function of temperature for an ideal gas. अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा H is nothing but डेल्टा ऑफ U plus PV. उसको हम खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है डेल्टा H भी 0 है. तो ये तो जनरलाइज हो गया सबके लिए. अब एक्सपेंशन दो टाइप के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल में भी दो टाइप है, इंटरमीडिएट और फ्री. अब रिवर्सिबल के केस में मेरा P external is comparable to P ideal. तो मेरा dW जो है that is minus P external dV. यहाँ से simply remember the formula that work for reversible process isothermal is minus nRT ln of V2 by V1. Repeat it in your minds. Minus nRT ln of V2 by V1. अगर मेरा W ये है तो Q is equal to minus W. सबके फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है. Why is Q equal to minus W? Because my delta U was equal to 0. और फर्स्ट लॉ से मुझे पता है, फर्स्ट लॉ से डेल्टा U is equal to Q plus W. So Q is equal to minus W. From here, W अगर मुझे पता चल गया तो Q पता चल गया. And what is W again? Minus 2.303 RT nRT log V2 by V1. We come on to irreversible process. In the irreversible process, we have two types. One is a free expansion. Free expansion मतलब freely expand हो रहा है तो external pressure मेरा zero है. अगर external pressure zero है, बाकी सब चीजें पहले ही zero थी, तो work done which is P external dV minus P external dV, that becomes equal to 0 and Q also becomes equal to 0. Then when I talk about intermediate expansion में what we have is minus P external dV holds its meaning, क्योंकि intermediate free नहीं है तो P external total 0 नहीं है, ना ही वो comparable है to P ideal. Ideal gas के भी comparable में नहीं है और 0 भी नहीं है. So we hold its meaning and that becomes minus of P external into V2 minus V1, which is minus P delta V also can be written. And your Q is nothing but equal to minus W. W पता चल गया तो Q automatically आपको पता है. So all these formulae done. I think we have little time left. So in that time we can do the numericals. So we can concentrate. जैसे हमने isothermal expansion करी है, वैसे we'll have an adiabatic expansion as well. So I'll give you the formula for adiabatic in the next class, but we concentrate on the questions now. All right. Let's take it up. Question number 1. Just keep looking at it. What is the name of the following statement? Zeroth law. This is the very first thing done. So I wouldn't expect anyone to fumble at this. Zeroth law. Next question. Which of the temperature scales doesn't have negative numbers? Kelvin will just not have negative. Very good. Next question. Which of two temperature changes are equivalent? Temperature changes. ये थोड़ा सा question में problem है. It should have been, the answer is to this question is D. 1 Kelvin is equal to 1 degree Celsius, because जब भी हम Kelvin में change करते हैं तो Celsius goes accordingly. You remember the absolute temperature scale that we arrived in the gaseous state. Next question. Now look carefully. This is something that is why you do it in a you do it in an order. What we did before was the ideal gas के सारे laws and सब कुछ, and all those can now be related to your thermodynamics का understanding also. So that is why you have a mixture of questions from here or there. The state of an ideal gas, look at the curve carefully. The state of an ideal gas was changed 3 times at 3 different temperatures. The diagram represents 3 different isothermal curves
Which of the following is true about the temperature of the gas? Look carefully. This is, you now know कि volume सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा. You are seeing that the curve, isothermal curves are moving from T1 to T2 to T3 to higher volumes. So ज्यादा volume किस पे होगा? You will have T3, right? Some kind of a qualitative understanding of what you have. So T3 can be greater than T2 is greater than T1. So C. Next question. A container filled with, this is question number 5, a container filled with a sample of an ideal gas at the pressure of 1.5 atmosphere. The gas is compressed isothermally to 1/4 of its original volume. What is the new pressure of the gas? देखो सबसे पहले यहाँ पे given है it's an ideal gas. It is already given to you that it is an ideal gas. If it is an ideal gas, that means pressure is inversely proportional to volume. इसमें कोई isothermal expression में नहीं घुसना जो अभी करे थे. Simply pressure और volume का information, pressure मांगा है, volume given है. ठीक है? So your pressure is 1.5 atmosphere. Volume is changing to 1/4. You know there is an inverse relationship. So इसका मतलब नया pressure would be 4 times. Got it? So what is 4 times of 1.5? 6. इसको जल्दी से करके भी देख सकते हो. P is inversely proportional to V. So P1 by P2 will be equal to V2 by V1. So P1 by P2 will be equal to 4 by 1. So that would be 1 by 4. And so it will be 6. So the answer to this will be E. That is 6 atmosphere. Next question. Look now carefully into it. All this is something that you have done before. So the state of an ideal gas was changed 3 times in a way that pressure stays the same. The graph represents 3 isobaric lines. Which of the following is true about the pressure? Again, the same logic that you can apply and then just answer this question. You have to compare your P1, P2, P3. Order एक ही side में चलेगा, या तो वो greater होगा या lesser होगा. तो option, there are 3 options which will get ruled out. The option number A is the correct one. D क्यों? P1, P2 same तो होगा ही नहीं. या तो बिल्कुल greater चलेंगे या बिल्कुल lesser चलेंगे. They are going in order. So see, in this particular case, A is the correct one. That means P1 is the highest, where the volume is the lowest. किसी भी चीज को लिंक करके देख लो. If pressure is high, volume will be low. And if you carefully look there, P1, if it is high, then in that case, your volume is the lowest there. Got it? Next. This is a revision of what you've done before. Now we have some questions from your newer concepts that you have done. Internal energy of an ideal gas depends on ideal gas. 1, options are here. A, B, C, D and E. So the answer is C. C means only the third part. That is the absolute temperature of the ideal gas. And which law is this? Joule's law. Right. Next question. Question number 8. A sample of an ideal gas has an internal energy. ध्यान से पढ़ना. Again, it is the Joule's law. I've given you the hint. Internal energy sample की है U and it is then compressed to 1/2 of its original volume. तो क्या change हो गया? Volume. दिमाग में सब चलना भी चाहिए ना कि क्या हो रहा है. While the temperature stays the same. Low. What is the new internal energy of the ideal gas? Temperature is same. So internal energy will just depend upon system. ये जरूर देख लेना कहीं ideal gas लिखा है कि नहीं. अगर ideal gas नहीं लिखा, then it will not be the case. We'll do more problems on it next time. Next question. A process in which pressure remains constant. Very easy. Isobaric. Next question. Which of the following is a state function? Heat, work and potential energy are path functions which depend upon the path followed. Internal energy is the one that only depends on initial and final state and not. अच्छा, एक चीज यहाँ पे I'll tell you. When we talk about internal energy, please make sure that whatever state functions we are talking about, all of them can be written as exact differentials. Exact होते हैं, जैसे
सिंपल डी, जब उस डी को थोड़ा सा स्लांट करके लिखते हैं दैट्स डो और डेल. आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट इन मैथ्स. सिर्फ इतना याद रखना फिर कि this internal energy, whichever is a state function, that can always be written in terms of exact differentials. Okay, exact word याद रखोगे तो all the state functions can be represented by exact differentials. जो proper dh du ये सारे क्या है exact differentials. Next question. Okay, question number 11. Look carefully. Here you have at a constant temperature the PV curve. The state of an ideal gas is changed isothermally from position 1 to position 2 is shown above. What is the change in internal energy? This is the third question that we are doing consecutively from Joule's law. So what is it? Tell me. The state of an ideal gas is changed isothermally. Isothermally मतलब क्या constant? Temperature constant. फिर ideal gas भी लिखा हुआ है. What is the change in internal energy? No change क्योंकि delta T is 0 तो delta U 0 different forms में. So they are actually telling you how you can hold your nose from different positions. So confused नहीं होना. These are just 5 not even 5 seconds questions. 1-2 seconds जो गोले मारने में लगेंगे वही लगेंगे. Next question. Okay, the state, now look carefully. The state of an ideal gas is changed in a closed path. 1 to 2 to 3 to 4 to 1. तो ये cyclical process है, ठीक है? Which of the following is true about the work done? तो अब internal energy नहीं पूछा. अगर internal energy होता तो क्या होता? 0. लेकिन यहाँ पे work done पूछा है. Now just carefully look at it. Work done in going from, what is work done का formula? Minus P delta V. तो जहां जहां पे डेल्टा V इज इक्वल टू 0, कहां पे डेल्टा V इज 0? 1 to 2 and 3 to 4, उसमें डेल्टा V 0 है. इसका मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. ऑप्शन ढूंढो जिसमें फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस का 0 है. D. So the answer is D. I'm not even completely doing it. Got the point? Look at the question again. Simple पूछा हुआ है कि बताओ वर्क डन कहां पे कैसे बिहेव करेगा, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव. जहां पे एक्सपेंशन हो रहा है वहां पे आपको पता है टोटल वर्क डन इज गोना बी नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम और कंप्रेशन का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो उन सब चीजों को ना देखते हुए इजी वाला पार्ट देखो. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. तो जहां पे मेरा डेल्टा वी इज 0 वहां पे वर्क डन विल बी 0. लुक फॉर दी ऑप्शंस. मेरा 1 to 2 and 3 to 4 विल डेफिनेटली बी 0. सो आई लुक इनटू दी ऑप्शन जहां पे 1 फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस का 0 है. So that is only one option, D. D and D. Okay. Now we have two options. I'm sorry. You have D and D. Now out of these, what we have basically is, now you look कि work expand कहाँ पे हो रहा है और compress कहाँ पे हो रहा है. जहाँ पे volume expand हो रहा है, वहाँ expansion means work will be negative. So now you have 2 to 3 is expanding. Right? If it is expanding, then that means work is done by the system. And if it is work is done, it will be E because they are asking for the work done on the gas. Got it? So work done on the gas will be following E. Next option. Next question is a sample of an ideal gas taken through a closed curve. Again, it is a cyclical process. The process 1 to 2 is perfectly isothermal. 1 to 2 only. ठीक है, 1 to 2 arrow मरा हुआ है ऐसे. Can you see the small arrow? Which of the following is true about the changes in internal energy and the work done by the gas in the process 1 to 2 only? So 1 to 2 अगर temperature constant है तो सबसे पहले U will be equal to 0. So the option number A, D and E hold good. Then in that case, अब work done का देखो, work done by the gas. So wherever the work done is positive by the gas, याद रखना वर्क डन बाय द गैस मींस नाउ वी आर सेइंग अगर उसने किया है तो पॉजिटिव, नहीं किया है तो नेगेटिव. वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग, सो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव क्योंकि गैस काम कर रही है. वो जो कन्वेंशन है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट कन्वेंशन इज ओनली फॉर द फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू.
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए है कि क्वेश्चन में इट इज क्लियरली गिवन दैट वी वांट द वर्क डन बाय द गैस, एंड वर्क डन बाय द गैस मतलब उसने किया है तो पॉजिटिव, नहीं किया है तो मतलब कम किया है या उसके ऊपर हो रहा है तो उल्टा नेगेटिव. करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14. A system is provided 50 joules of heat. So Q is equal to 50 plus या minus plus क्योंकि provided है, and work done on the system is 20 joules plus या minus plus. What is the change in internal energy? Q plus W, that is 70. So the answer is D. Next question. करो. A gas occupies, start doing. A gas occupies 2 liters at standard temperature pressure conditions. Okay, at standard temperature pressure conditions, it is provided 300 joules heat so that its volume becomes 2.5 at 1 atmosphere. Calculate the change in internal energy. Calculate the change in internal energy. Standard temperature pressure condition means, if I have to solve this question, question number 15, I know that work done is equal to minus P delta V. All of us all know that. Agar I take the pressure to be 1 atmosphere, then in that case it will be minus 0.5 liter atmosphere में, क्योंकि volume changes in liters, that is 0.5, right? And your pressure is 1 atmosphere. अब liter atmosphere को अगर मुझे convert करना है to joules, then in that case it will be minus 0.5 into 1.987 upon 0.0821 into 4.184 in joules. That will be equal to minus 50.631 joules. Now let me tell you यहाँ पे क्या फंडा यूज करा है. This is like the conversion factor for R. I told you in one of the classes that I'll give you the values of R. Please note down. R is equal to 1.987 calories per Kelvin per mole. Okay. R can also be written as 8.314 into 10 to the power 7 ergs per Kelvin per mole. R can also be written as 8.314 joules per Kelvin per mole, and it can also be written as 0.0821 liter atmosphere. Liter atmosphere मतलब ये वाली units जहाँ पे pressure is in atmosphere and volume is in liters. So liter atmosphere per Kelvin per mole. ठीक है. तो हमने क्या करा, हमारा जो लिटर एटमॉस्फेयर था उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने ये कैलोरीज वाला वर्क यूज करा. सो वी मल्टीप्लाइड इट, 0.0821 liter atmosphere will be equal to 1.987 calories. क्लियर. ये कैलोरीज में वर्क डन है, ये लिटर एटमॉस्फेयर में है. सो अगर आए 1 liter atmosphere will be equal to 1.987 upon 0.0821. ठीक है. और फिर 1 calorie is equal to 4.184 जूल्स. फिर उन कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 4.184 से मल्टीप्लाई करा. ये तो मैंने एक्सपैंड करके बता दिया, नहीं तो इसको सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 101 into 325 also. You can multiply it with 101.325 direct. You can check it also. All these are constants only. So why not summarize it? Liter atmosphere को directly अगर मुझे joules में convert करना है, तो what I can do is I can directly multiply the liter atmosphere work into 101.325 to get it in joules. Given. Now what are we supposed to find out? Coming back to the question. Question कितनी जल्दी होगा, अब ये question देखना. We have the volume change. Volume change was 0.5. STP condition, so 1 atmosphere. So what is the total work done? That is 0.5 liter atmosphere. उसको जूल में convert करना है, तो 0.5 into 101.325. That turns out to be equal to minus 50.631. बताना क्या है? Change in internal energy.
The change in internal energy is equal to Q plus W. Am I given my Q? Yes, it is provided with 300 joules. So 300 minus 50.631. Find it out and just correct that answer. Right? Then we have the next question. Check out question number 16 now. Calculate Q for isothermal reversible expansion. Isothermal reversible expansion का मतलब अभी हमने करा है. What is the work done? Minus nRT ln of V2 by V1. अगर V2 by V1 है और आइडियल गैस है तो V2 by V1 को I can also write as P1 by P2, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं प्रेशर दे रखे हैं. If you carefully look at the question. So remember that for an ideal gas isothermal reversible expansion, what I had initially done was that the pressure can also be incorporated in the formula, and the formula that I had for the irreversible expansion was the formula for the work done was minus 2.303 nRT log of V2 by V1. What is the one that we derived? Then what we have is, this can also be written as 2.303 nRT log of P1 by P2, because we are just talking about ideal gases. और ये हमने कैसे करा? PV is equal to nRT वाली equation से, using the ideal gas law equation that we have done. Okay, so now direct question है. It is minus, we have to find out the Q. So again, in order to find out Q, we can find out the work done. What is work done? Minus 2.303 RT log of P1 by P2. What is P1? 2 upon 0.2. Units to cancel हो जाएंगी. So what will be 2 upon 0.2? That will be 10. What is log 10? 1. So you have 2.303 into 1 into 8.314 into 273, which is minus 5227.2 joules. What is this? Work done. What is this? Work done. Minus 5227.2. तो इसीलिए गलती से भी B click. I mean, we have B only here as answer, but it should have had a positive sign. It should have had a positive sign here. I mean, in order, because we are asked Q and Q is equal to minus W, so it should have been positive. ऐसे केस में आप आंसर मार्क ही नहीं करोगे. There may be errors very rarely in your papers also. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आंसर क्या है? B for work done. पूछा क्या है? Heat energy. तो heat energy यहाँ पे नहीं है. Heat energy should have been plus 5227. So you would rather not mark it. Next question. Because sometimes you have negative marking also. So all these questions are the ones which eliminate students. Intelligence के basis पे भी, this is also over intelligence that you feel that this may be the correct answer. So you will be eliminated. Next question. Question number 17. Which of the following is an extensive property? Which of the following is an extensive, no, this is not the question. If the temperature of the system remains constant during the course of a change, the change is called isothermal. Next question. Question number 18 is, which of the following is an extensive property? Enthalpy, concentration, density, viscosity. Here, extensive property is enthalpy, which depends upon the quantity of the substance. When we talk about concentration, it is number of moles per volume. So I mean, somewhere down the line, the mass by mass unit is like cancelling each other. You will find out in all these cases, wherever there is a ratio of mass by mass, density is also mass by volume. So it's like a ratio. So in generally, intensive, there are some properties of intensive and extensive variables. Wherever you see that an intensive variable, extensive by extensive gives you an intensive variable. Is that all right? Extensive by an extensive property, it's an next question. So enthalpy is the correct answer here, which depends upon the quantity of substance.
Internal energy of a system of molecules is determined by taking into consideration its internal energy. कौन सी? Kinetic energy, vibrational energy, rotational energy, all kinds of energies present in the molecule. All kinds of energies. Next question. A gas expands, very simple question. A gas expands 0.5 liters against a constant pressure of 1 atmosphere. ठीक है, और इस केस में हमें बताना है कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स. वी हैव जस्ट डन इट एज अ पार्ट. इसका आएगा P delta V will be nothing but in liter atmosphere. Answer is given in joules, right? And what will be the answer? Minus P delta V, right? Again, the minus sign is missing from the C part. Sorry for the errors in typing that I have done. The answer is minus 50.664, which should have been the third part. Again, in such a case, just leave the question, but it will not be the error in your examination. Right? How do you convert liter atmosphere to joules? It is when you multiply it with 101.325, right? So you can get it. Let's take up just one last question for today. 21 पे छोड़ते हैं ताकि बाकी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. A system has internal energy equal to U1. 450 joules of heat is taken out of it, and 600 joules of work is done on it. Find the energy of the system. Work it out. This is, just carefully work it out. In this case, U1 is already there. What we have is heat taken out. Taken out means minus 450. Work done 600. तो additional U1 कितना हो गया हमारा? 600 minus 450 मतलब कितना? 150. So that 150 should be added to the internal energy. So option number A. Verbally done. Let's take one last question for today. Question number 22. Okay. Finally, the last question. Quickly look at it. A sample of oxygen gas expands its volume from 3 liters to 5 liters against a constant pressure of 3 atmosphere. Okay. If the work done during expansion be used to heat 10 moles of water initially, present at 290 Kelvin, its final temperature will be. Now we are supposed to tell final temperature. This is based on the specific heat formula, right? What was Q equal to? MC delta T. So here in this case, what we have is work done in expansion will be work done in expansion. I'm just quickly solving it. It will be P delta V. So that will be 3 into 5 minus 3, right? 3 into 5 minus 3, that will be equal to 6 in liter atmosphere. This is for this question. Work of expansion is nothing but 6 liter atmosphere. अब इस work done को we can convert it into joules. कैसे? By multiplying it with 101.325. That will be roughly 607.8 joules. Let the temperature change be, say, delta T, be the temperature change of water. Temperature change of water अगर ये है, so then in that case, मेरा जो work done है, that is P delta V, that is 608. That will be nothing but equal to, you know that work is related to heat, so that can be related to MC delta T directly. So here in this case, that will be equal to, I of course did not incorporate the minus sign. Minus P delta V will be minus 6 liter atmosphere. So work done will be equal to minus 607.8 in joules. Joules में आप convert सबको करना आता है. अगर joules में ये है तो मेरा Q is equal to minus W. If in case my internal energy is given to be a constant, so 607 will be equal to M into S. What is M? 180. All right, then in that case, what we have, the specific heat of water is 4.184 into delta T. And the delta T which is given is equal to 0.81 Kelvin, something like that, right? So delta T from here comes out to be equal to 0.81 Kelvin. So T final will be equal to 290 plus 0.81, which will be equal to 290.81 Kelvin, which is option number B. So I'm just telling you how you can actually utilize your first law and relate it to other things that you have done in chemistry. आपने Q is equal to MC delta T आज तो नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा था.
but you can always relate it to this. How? You can actually find out the work done using this formula from your basic laws of thermodynamics. अभी आपने सिर्फ एक ही law करा है, that is first law. You can write down that Q is equal to minus W for the constant pressure is like given here, work done during an expansion is given. So here, if you take your internal energy to be constant, Q can be related to W in this fashion, minus W, which is this, which is equal to MC delta T. And using that, you can find out delta T निकालो, और एक temperature given है, so you can find out the final temperature. So that ways you can do this. Practice more problems on it. On first law, it is not just really very small. So keep practicing more problems related to it, and next time we'll move with other laws as well. Okay, thank you.
Should I start? Good afternoon. The topic today, as it says, rotational dynamics. We are going to cover basically under three different categories: torque, MOE, and angular momentum. What is MOE? Moment of inertia, as you know. Let us assume, as I assume most of the time, that you know kinetics, kinematics, work, power, energy, and center of mass, because these are the knowledge which I will be requiring. Okay, especially the knowledge of center of mass, which you have been doing last three classes, two classes, I guess. So let's develop a all-round approach towards that subject by virtue of uh, noting down certain physical quantities, which I can always assume that you have done in your Cbse board classes, but there's nothing wrong to list them down and understand wherever you feel. So please let me know so that I can explain. Let's begin. Today I will be trying to cover torque and MOE, and tomorrow I will be doing angular momentum and rolling, two topics separately. So let's begin with the torque. What is torque? You can keep writing. Torque is R cross F. We have done it many times. Torque is R cross F, but what is the meaning of torque? It probably is not the meaning of torque. It's a mathematical formula of torque. What is the meaning of torque? Again, it's a formula. This formula is a formula which we call in polar coordinate. Force into perpendicular distance from anybody want any correction? From the center of mass or from some other? From the AOR, axis of rotation, because center of mass might not be always the point of fixation also. Okay, but say like this, it is the perpendicular distance जो आप कह रहे हो, it is the distance from the axis of rotation to the point of application of the force. Okay, but what is the meaning? Still meaning is it's mathematical formula only, you told me. R cross F is a mathematical formula. That is a force only. You are telling me the force से torque कहाँ हुआ? You are telling me force required to rotate, so it's a force only. Analog of force in rotational motion. Okay, accepted, no problem. But for that, I have to understand what the force, what job force does in translational motion. If I have to understand by this definition, if I have to understand torque, I have to have a full knowledge of force. So what force does? Force का काम क्या होता है? बॉडी को एक्सेलरेट करना, तो इसका मतलब टॉर्क भी यहाँ एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, अभी भी मीनिंग नहीं समझ में आया. मीनिंग क्या हो सकता है टॉर्क का? मीनिंग अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू से टॉर्क इज द effect of a force which turns into rotation. That means not every time you have a force, you can guarantee someone that there is a torque also. It depends. So it is that effect of the force which you can say the rotating effect. Simply, rotating effect of a force is torque. Okay. So having force does not mean that you will have having torque also. Having torque always essentially means that there must be a force. ठीक है, तो आपने जो कहा था मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी. अब अगर टॉर्क एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो फिर डेफिनेटली दैट एक्सेलरेशन विल बी रोटेशनल एक्सेलरेशन, बिकॉज टॉर्क, as you said, torque plays the same role as the force plays in translational motion, and force generates acceleration in translational motion. You can call linear acceleration. Similarly, torque will produce angular acceleration. Okay, so if I can find a quantity which is similar to mass, then I can write a formula which is called Newton's second law in rotational motion. Newton's second law in translational motion is what? F equal to ma. But for that,
hold on, we have to find a quantity which I will be writing in place of mass, and that quantity is MOE, moment of inertia. How it comes as a MOE, how can you recognize MOE as a quantity which is similar to mass? That is something very interesting as far as the knowledge and debate is concerned. करूंगा मैं जब मैं moment of inertia कराऊंगा, but we can understand that moment of inertia plays the same role as the mass. Okay, so इसका मतलब अगर मैं सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहूं तो कौन सा फॉर्मूला होगा रोटेशनल मोशन में? आई एल्फा सिंपली, और एल्फा आप पहले से ही जानते हो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर. सो एक फॉर्मूला ये हो गया. ठीक है, नीचे जाइए सर. नाउ see children, Newton's second law is not F equal to ma. Somebody might have told you, I don't know whether I or somebody else, it is actually rate of change of which momentum? You need to tell now linear momentum. Now because we have to deal with the two momentums, bye. So we have to bifurcate them, otherwise they will create chaos. So rate of change of linear momentum is force. So somebody might say rate of change of angular momentum is torque. So that is another formula. Okay? Torque is equal to dl by dt, where L happens to be angular momentum. अब जरा angular momentum भी लिखना चाहो तो लिख लो. What is the linear momentum formula in translational dynamics? Mass into which velocity? So what should be here? I into omega. वो angular momentum का formula आ गया. ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है फिर इसका मतलब ये. ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी देखना, अभी आपके सबके कचूबर निकलने वाले हैं इसमें. ये है ऐसा चैप्टर, परेशान. अभी मैथ्स के टीचर थे हमारे साथ नीचे बैठे हुए, बातचीत चल रही थी, कहते कि जब हम पढ़ते थे तो रोटेशनल डायनामिक्स देख के डर लगता था, अभी भी बच्चों की ये हालत है क्या? मैं कहा बिल्कुल वही चीज है. रोटेशनल डायनामिक्स में काफी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं. ठीक है, एंड प्रोबेबली रोलिंग आते आते यू विल रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेबल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन क्लास 11th. लेट्स सी, ये जो बेसिक फॉर्मूले थे, इन बेसिक फॉर्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे टू अंडरस्टैंड टॉर्क, एंड wherever we have to find the torque, angular momentum related things, we can use these formula. इसमें जो एक एडिशनल नॉलेज हम लोगों को चाहिए होगा, that is going to be I, क्योंकि most of the time I will be something which we will be requiring. ठीक है, so probably क्वेश्चन करते समय we have to have a complete knowledge of finding the moment of inertia. ठीक है, ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में कभी हमें ऐसी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि अगर मैं पढ़ाते समय काइनेमेटिक्स बच्चों को बोलूं कि मास के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, बच्चे कि ये कौन सी बड़ी बात बोल रहा है, ये तो हमें शुरू से ही नॉलेज है, मास दिया होता है. लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जिसका नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू विल बी सरप्राइज, बहुरूपिया होती है, बदलती रहती है अपने आप को. इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन. वही बॉडी होती है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाती है. इसका मतलब हमको सीखना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द स्पॉट कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो दैट सिचुएशन जैसे बदले वैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें. ऑब्वियसली टॉर्क पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अल्फा आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस फोकस फ्रॉम हियर. ये दो डायग्राम हमने ऐसे दिया है. आई विल बी डूइंग दीस क्वेश्चंस फॉर यू. लेट अस फोकस फ्रॉम हियर डायरेक्टली टू द moment of inertia and see that how do we calculate the moment of inertia, okay, of different objects. इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो आप चाहते हो मैं डिराइव करूं, r क्रॉस f को डिराइव किया जा सकता है कार्टेशियन मेथड से. मैं बोल रहा हूं, अगर आपने कर रखा हो तो बता देना, अदरवाइज मैं कर सकता हूं, टाइम बहुत लगेगा. लेकिन कार्टेशियन मेथड से r क्रॉस f का डेरिवेशन हो सकता है, जिसमें i कैप, j कैप, k कैप, फिर x y z, फिर fx fy fz फॉर्मूला निकलता है. ठीक है, जिसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाते होंगे आपके टीचर्स, मैं तो जरूर सिखाता हूं. ठीक है, अपने स्कूल में. ओके, इसी तरीके से इसका डेरिवेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, डीएल बाय डीटी तो मैंने एनालॉग करके ले लिया. ठीक है, तो शुड आई मूव ऑन, डिराइव नहीं करता हूं. ठीक है, लेट्स नाउ बिगिन चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अ क्वांटिटी कॉल्ड मोई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सपोज देयर इज अ पॉइंट मास m and it is rotating about this axis. Let this be axis of rotation, AOR. Let the rotation is taking place with the radius r. Let the velocity be v, linear velocity.
Please keep telling me when I ask, what is the linear momentum of this body? What is V related with omega? As I told you, angular momentum is I omega. However, since angular momentum is analog of linear momentum, okay, I must find angular momentum by this method as well, this being vector. And if I find angular momentum by this method, R cross P, I can write this as RP sine 90 degree in this situation. This is R mv, this is mr square omega. Right or wrong? ठीक है? Now what is this? This is mr square omega. I need to write this as I omega. मजबूरी है मेरी, because I need to understand L as analog of P. And what is P? Mass into velocity. I needed V का कोई counterpart which I got already here. And what is that counterpart called? Angular velocity. I needed M का कोई counterpart जो मुझे इस फॉर्म में मिल रहा है. इसीलिए हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं कि moment of inertia is defined as this. सबसे पहला, अगर किसी के दिमाग में कभी ये चीज उठा हो, मुझे लगा था जब मैं पढ़ता था कि यार mr स्क्वायर से क्यों डिफाइन कर दिया सडनली, ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, सो व्हाई डू वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज m into r स्क्वायर? उसका जवाब मैंने यहां दिया. इट इज अ रिक्वायरमेंट of a situation such that we want to set up an analog between which kind of motion? Translational motion and rotational motion. While doing so successfully, everywhere we reach to a place where we are in dire need of a quantity which will represent product of mass and square of the distance of mass from the axis of rotation. So it becomes moment of inertia. But ये तो point mass के लिए हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी point mass का moment of inertia mr square हो गया, point mass का. अब बहुत सारे point mass होंगे तो कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब हमें सोचना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए ये दो नॉलेज बहुत जरूरी है, वेक्टर और स्केलर का. अदरवाइज आप हमेशा x का y का x करके आओगे, उल्टा सीधा हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें 4-5 मासेस को ऐड करना है तो शायद ही हम डायरेक्शन पूछते हैं किसी से. पूछने वाला बच्चा बेवकूफ होता है. आपको सिंपली ऐड करना होता है, लेकिन अगर 4-5 फोर्स को ऐड करना है तो आप जरूर तो नहीं बोलोगे डायरेक्शन बताओ, क्योंकि पता है कि फोर्स बिना डायरेक्शन के ऐड नहीं होता. तो अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? ऐड कर दूं? क्यों? डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. अगर आप ये कहते हो, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. सो लेट्स बी श्योर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. Okay, it is a scalar quantity. That means we can add the moment of inertia of different point masses and we can find the net moment of inertia of a body. But what if the masses are not rigid? If the masses are changing, then probably it will be very difficult to find the moment of inertia. For example, अभी मैंने experiment शुरू किया, मास यहाँ था, एक्सिस ये है. 1 सेकंड के बाद ये मास खिसक के यहाँ आ गया. सिलेंडर में पानी भरो और आधा भरना, ठीक है, और उसको घुमाना शुरू करो. जैसे जैसे घुमाओगे पानी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे दूर की तरफ भागेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. शुरुआत में पास पास थे, कुछ टाइम बाद दूर दूर चले गए, बीच में पता नहीं कहां थे. दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर. ये तो दिक्कत हो सकती है. इसका मतलब लेट अस कन्फाइन इन द बिगिनिंग कि जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूं दैट इज वैलिड ओनली फॉर द रिजिड बॉडी, ताकि नौबती ना आए. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नॉन रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली नहीं जा सकती है. माइंड इट, निकाली जा सकती है, कोई बात नहीं, तसल्ली से जब कभी जरूरत पड़ेगी. बट रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो वी कैन एश्योर दैट अगर कोई मास है, उसका डिस्टेंस r1 है, तो पूरी जर्नी, पूरे जिंदगी भर वो r1 ही रहेगा. ये है रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आपने कर रखी है. ठीक है, तो ऐसे किसी रिजिड बॉडी के बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा. सपोज करो एक रिजिड बॉडी है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. कैसे निकलेगा? कोई भी बॉडी ले लो रिजिड शेप का, ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये भी एक रैंडम ले लिया मैंने,
मान लो ये m1 है, ठीक है, r1 डिस्टेंस पे है, m2 r2 डिस्टेंस पे, m3 r3 डिस्टेंस पे. How to find the moment of inertia? So on and so forth. Now, if I have to move like this, keeping all the masses different, then that is my wish. I might reach nowhere. बस ये result है, ठीक है? Because if the rigid body is so that it has got all the masses different, तो आपने बनाया rigid body ऐसा बनाया क्यों? ठीक है? तो उसके moment of inertia निकालो फिर. But normally God ने ऐसा नहीं किया है. God ने जो किया है वो बहुत अच्छी तरीके से हर रिजिड बॉडी के जो मासेस होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं कुछ नंबर ऑफ मासेस तक, ठीक है. फॉर एग्जांपल आयरन का टुकड़ा ले लिया, आयरन का टुकड़ा तो आयरन ही तो होगा उसमें, ठीक है. तो ज्यादा अब आप कहोगे सर नहीं कॉपर सल्फेट का ले लो, तो ठीक है कॉपर सल्फेट होगा उसमें मॉलिक्यूल में, ठीक है. आप कहोगे तो सर कोई केमिस्ट्री में पढ़ाया था हमें किसी बार एक टीचर ने कि उसमें कुछ जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, कुछ जो कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग उसे, उसके मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं. तो जितने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे नेचुरली उनका अगर मास अलग अलग होगा तो इट्स गोइंग टू बी डॉन्टिंग टास्क टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेट अस बिलीव दैट. बट अगर मैं एक नॉर्मल सिस्टम में बात करूं तो सारे मासेस आइडेंटिकल लिए जा सकते हैं पार्टिकल के, सब सेम, ठीक है. तो कितने आसानी से मास कॉमन ले सकते हो. इफ आई टेक दैट, इफ आई टेक मास आउट, देन ये तो अलग अलग होंगे. सो दिस वुड बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर rn स्क्वायर, ठीक है. हाउ मेनी मासेस आर देयर, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? n. व्हाट इज n? व्हाट इज n? नंबर ऑफ, हाउ मेनी n? कुछ इसका कुछ लिमिट है? डर तो नहीं रहे, ये तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही. ओके, सो इफ इट इज n and if I divide by n and multiply by n, then what is this mn? So I got this total mass plus multiplied by this quantity. Okay, I have still a lot of problem. Mathematically, I am facing a problem. That's why I'm trying to tell you that r1 square plus r2 square plus r. Tell me that whosoever is mathematically vidwan or very intelligent, who is going to take interest in finding this? At least मेरा खानदान तो बनाई करते कि क्या कर रहे हो, ये पागल हो गए हो क्या? Because how do you find r1, r2, r3, r4, rn? Technically speaking, and then square them all and then add them, divide by n and as it is not known, ठीक है. So conceptually कुछ इसको कुछ ब्रैकेट को कुछ बताना हो, कुछ बोलना होगा, ठीक है. कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, मान लो के बोल देते, चलो के वाला पढ़ रखा है, ठीक है, सब जानते हैं मैं आगे क्या बताने वाला. तो मान लो के बोल देता हूं, तो चलो के स्क्वायर हो गया ये, ठीक है. वेयर के इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर plus rn square upon n का स्क्वायर रूट. ठीक है. where this k is actually known as rho, radius of gyration. Okay, radius of gyration. Such a wonderful meaning of this. अभी बताता हूँ why do we call it radius of gyration. Gyration has a meaning. If you type on Google and find the meaning of gyration, you'll get a wonderful meaning of gyration. Okay, on the basis of that you can always conclude the meaning of radius of gyration. But I will be taking few minutes before coming to the meaning of the radius of gyration. Let us move on from here. Now this formula, if I compare with mr square which I calculated for a point mass, don't you feel they are same? पॉइंट मास का मास m. पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे था, कहां से, ठीक है. ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने, इसका मास m m m, ठीक है. के हमने रेडियस ऑफ गायरेशन कहा,
हो सकता है दुनिया वाले ना माने, बोले पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तो उसको कैसे समझाऊंगा मैं कि ये जो के है ये इसकी जगह है, तो जैसे रोल प्ले ये कर रहा वैसा रोल प्ले ये भी करना चाहिए इसको भी। तो ये कौन सा रोल प्ले कर रहा था? व्हाट वाज आर देयर? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। I might say that k is the distance of point mass, तो कह नहीं सकता, the whole mass supposed to be confining to a particular point from the axis of rotation, supposed to be confining, center of mass आप कर चुके हो, ठीक है। इसका मतलब ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि जब कोई चीज रोटेट करने लगती है तो उसका जो पूरा मास होता है वो वहां नहीं होता जहां होता है, नहीं समझे? जहां गॉड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका पूरा मास वहां नहीं होता, वो अपने आप को कहीं एलोकेट कर लेता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मत ले आओ, बट वी कैन से दैट जब भी कोई चीज रोटेट करने लगती है तो रोटेट करते समय द होल मास ऑफ द बॉडी confine itself to a particular distance from the axis of rotation, and that distance is known as the radius of gyration, ठीक है। Now if I move on, then I can take one simple oath, and I want all of you to take that oath with me and move on, that let us love this formula. Let us love this formula. Whenever we have to find the moment of inertia of any object, we must not forget that the basic formula of a point mass as well as the as random body as you can think is same. Point mass mr square and any random shape body is mk square. Now whatever you want to change, you change. You want to change the body, change it. M will change, K will change. Formula will remain same, mk square. You want to change the axis of rotation, change it. Mass will remain same, K will change. So the basic formula of moment of inertia will remain mk square or mr square. अब mr square हर जगह नहीं बोलेंगे। मैं बच्चों को अक्सर सुनता हूं जब भी कभी, चूंकि सर्कुलर मोशन कर रखा आपने, रेडियस करते करते हम लोग की आदत बिगड़ चुकी होती है यहां तक आते आते, इसलिए बिगड़े हुए आदत से हम लोग हमेशा आर को रेडियस बोल देते हैं। अक्सर जब भी हमें बोलना रोटेशनल मोशन में, हम ज्यादातर बच्चों को आर मींस रेडियस बोलते सुनता हूं। आर इज नो मोर स्टैंडिंग फॉर द रेडियस, ठीक है। इट माइट स्टैंड फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन, बट दैट आल्सो आई एम चेंजिंग द नोटेशन कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी दूसरों को भी कंफ्यूज मत करो। जहां आर होता भी है वहां आर को रेडियस कभी भूल के भी मत कहो, कोई गला दबाए तब भी मत कहो उसको। आर को क्या कहो? डिस्टेंस ऑफ द व्हाटएवर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट कुड नॉट बी रेडियस, it could not be radius of the body might not be circular, ठीक है। Is that okay? Let's see how to now find the moment of inertia of different objects which are not random, because random का तो निकालना मैंने सिखा ही दिया। अगर random की moment of inertia हमें निकाली तो mk square simply। एक चीज बताऊं बच्चों, एक बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा था हमने किसी स्कूल में, मुझे याद नहीं कहाँ गया था मैं प्रैक्टिकल लेने, तो 12th क्लास के बच्चों से नॉर्मली 11th क्लास के क्वेश्चन पूछने का तरीका इसलिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि उसको फंसाएं कैसे, क्योंकि 12th वाला बच्चा 12th में तो जवाब दे ही देता है और बिना फंसाए हमें पता नहीं चलता कि हम अच्छे हैं या बच्चा अच्छा है। तो टीचर और बच्चे में कंपटीशन चलता है वाइवा जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो नॉर्मली 11th के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक रैंडम बॉडी है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालो। बच्चा इंसिडेंटली इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसके बाद ही मैंने पूछा, उसने कहा mk स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा व्हाट इज के, उसने कहा k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने कहा व्हाट इज के बेटा फर्दर, उसने कहा सर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। मैंने कहा मुझे निकालना है, तुम ये क्या बता रहे हो, मुझे निकालना है, कैसे निकालू कैसे? आई वांट टू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। How do I know R1, R2, R3 plus Rn? I want to calculate moment. I'm very serious. I want to calculate. There's a random object. कुछ भी, इस कुर्सी का इतना ऐसा काट लिया मैंने, रैंडम, बिल्कुल कोई भी रैंडम टुकड़ा ले लिया ऑब्जेक्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालें? फॉर्मूला ठीक है, बट प्रैक्टिकली निकालें कैसे? How to find it? How do you do that? Because then what is R? R will be obviously in place of k square, you're getting R square, not a big deal. K and R, they are, for you it is R, for me it is K. So practically how to find it?
And children, this is where you must understand that 80% physical quantities, they are actually never calculated directly. If you unnecessarily burn your mind here, कि इसी फॉर्मूले से निकालना है, you will never be able to succeed. There are so many other indirect methods to find the physical quantities. And one of the indirect method will be now, इसको यहां से आपने फिक्स किया और इसको यहां से फोर्स लगाया F और रोटेट कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया. फोर्स कितना लगा आपको ये पता होना चाहिए, फोर्स निकाला जा सकता है. ठीक है, जब आप घुमाओगे, it might start turning and maybe it is going to turn few revolution in few seconds. You watch, take a stopwatch and measure that time. Okay, got it? Now, because you got the time, you can always find alpha. Now, because you got force, you can always find torque. Because you got alpha, you can always find I. Got it? Now, I is the moment of inertia, which is torque upon alpha. Who says that in order to find I, you use this formula? That means to find the moment of inertia of a different body, ठीक जैसे किसी random object का volume निकालने के लिए छोटी क्लासेस में बताते हैं कि उसको किसी पानी के बर्तन में डुबा दो और जितना पानी बाहर ओवरफ्लो किया उतना उसका वॉल्यूम. ठीक है, वैसे मत निकालने लगना कुछ धागा होगा लगा के, नहीं निकाल पाओगे. So we find the moment of inertia. Now this value of moment of inertia which I have calculated, in fact this will easily give me value of k because mass of the body is known. So radius of gyration can easily be calculated. Fine. But अगर कोई मान लीजिए ऐसा सेफ है जो सिमेट्रिकल है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग मैथमेटिकली आराम से निकाल सकते हैं. सिर्फ उसका रेडियस पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए. तो हम लोग कन्फाइन करते हैं सारे सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए. ठीक है, एक एक करके सूच करते हैं. सपोज करो कोई रिंग है. रिंग की सिमेट्री ये हमें सिखाती है कि रिंग के सारे मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो कोई पंगा नहीं है. डिस्टेंस का ही तो पंगा था वहां पर, कब से समझा रहा हूं. यहां देखो सारे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होंगे सारे, तो ये तो बहुत आसान हो गया. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक मास डीएम ले लूं, ठीक है, और उस मास को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डीआई आ जाएगा. व्हाट इज डीआई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास. मैं आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूं, 0 to m एम आर स्क्वायर. रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. ये चीज समझ में आ गई? दैट मीन्स अगर सिमेट्रिकल बॉडी हमें पता हो तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं. एक्सिस चॉइस प्लीज स्पेसिफिकली डिसाइड कर लो, बिना उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट. तो चॉइस ऑफ एक्सिस, मैंने जो एक्सिस लिया, इस एक्सिस को देख के कितने लोग बता पाओगे व्हाट इज दिस एक्सिस? मैं अगर नाम पूछूं तो व्हाट इज दिस एक्सिस? इज इट सफिशिएंट टू से परपेंडिकुलर एक्सिस passing through the center of the ring? Because there are many such axes which are still perpendicular to the plane. Getting? All are perpendicular, but none of them are passing through the center. So only one axis is passing through the center. Fine. Sometimes somebody calls this natural axis also, because such symmetrical objects, once you rotate, they start rotating about this axis called natural axis. Okay. Tell me quickly, if I could have been taken a disc rather than a ring. Disk, natural axis again I have taken. Moment of inertia about this. रिजल्ट तो आपको याद होगा. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मेथोडोलॉजी. कैसे निकालोगे बोलो? आर डिस्टेंस पे एक रिंग ले लूं, इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो. इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी भी निकाली. किसी भी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? एम आर स्क्वायर. इस रिंग की जो मैंने लिया है, इसका अगर मास मैं डीएम ले लूं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? डीएम इंटू आर स्क्वायर. पूरे डिस्क का रेडियस मान लो आर है,
और पूरे डिस्क का मास m है. See how easily we can calculate. Total moment of inertia will be integration of dm into r square. Now children, subject of center of mass might have taught you three things. I think before the starting of the center of mass also somewhere I mentioned this. There are three mass densities which are important: LMD, AMD, and VMD. What are they representing? Linear mass density, areal mass density, volumetric mass density. Use it to find the mass of a linear body whenever you require. Use it to find the mass of the aerial body wherever you require. Use it to find the mass of the volumetric body wherever. Infinitesimal mass जो इंटीग्रेशन में यूज होता है. आप जरा सोच के बताओ कि मुझे यहाँ कौन सी डेंसिटी यूज करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसका एक एरिया होगा. ये जो मैंने डार्कन किया इसका एरिया कितना होगा, कौन बताएगा? ये डार्क पोर्शन जो मैंने किया है कितना होगा इसका एरिया? इसको आप काट कर एक स्ट्रिप की तरह फैलाओगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. बनेगा ना रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू. अगर मैं इसके थिकनेस को dr मान लूं तो काट कर लंबा करने पर जो रेक्टेंगल बना उसका लेंथ क्या होगा? 2 पाई r. और थिकनेस कितना है? इसलिए एरिया कितना होगा? 2 पाई r dr. ये क्या है? सिग्मा एरियल मास डेंसिटी. सिग्मा इंटू da विल बी dm. समझ में आया? मैं कहूं तो लिख दूं, लैम्डा होगा dm बाई dl, सिग्मा होगा dm बाई da, और रो होगा dm बाई dv. आई एम अज्यूमिंग दैट आपको आता है ये, फिर भी बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर सिग्मा dm बाई da था तो dm क्या होगा? सिग्मा इंटू da. da की वैल्यू आपने क्या बताया? 2 पाई r. सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr. Got it? Now if I know आप सर एडजस्ट कर लो इस हिसाब से. If I know this, I can write the value of this in this, and therefore I get sigma into 2 pi r dr r square. Fine. This is 2 pi sigma r cube dr integral. What is r cube integral? r power 4 by 4. Limit नहीं बताया आपने मुझे. What should be the limit here? 0 to capital R, because limit I need for dr, and dr is the small thickness. Obviously small r is ranging from 0 center to rim, and rim पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सटेंड होके कैपिटल R. If I put the value here, it is 2 pi sigma क्या होगा? m upon pi r square into r power 4 by 4, that is r power 4 by 4 minus 0. If you solve, children, you will get mr square by 2. ठीक है? डेरिवेशन है आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है. मैं अब बता के सिर्फ आपको ये चीज बताने में इंटरेस्ट दिखा रहा था कि कैसे आप फॉर्मुलेट करोगे किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते समय. आपको सोचना होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो वो किस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स को रिपीट करके सिस्टम बना हुआ है. इफ यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सच सिस्टम which is repeated again and again, then you can find the moment of inertia of the total body. आपने सेंटर ऑफ मास भी ऐसे निकाला होगा, ठीक है? रिंग का या किसी कोन का, ऐसे ही, ठीक है? अब जरा देखते एक बार, मैं रोक को दोबारा यहां पर इंट्रोड्यूस करके बताना चाहता हूं कि वो जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि while rotation going on, the whole body of the mass, the whole mass of the body is not confined to the places where it looks like for all of us. It actually gets shifted. जरा ध्यान से इस रिजल्ट को देखते हैं. ये mr स्क्वायर के फॉर्म में है क्या? बट एक चीज और आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए 2, मुझे तो mr स्क्वायर चाहिए. तो अगर मैं इसको mk स्क्वायर के बराबर कर दूं तो k की वैल्यू बताओ क्या आ गया? इसका मतलब समझाता हूं. सपोज करो मेरे पास एक डिस्क होता, ठीक है? और डिस्क का रेडियस r होता, डिस्क का मास m होता. जैसे वो डिस्क नहीं होता जो सीडी की तरह होता है, कोई भी डिस्क, ठीक है? या एक साइकिल का पहिया,
जो साइकिल का पहिया डिस्क शेप में होता है, जो ओलंपिक में आप ध्यान से कभी देखो, ओलंपिक के जो साइकिल्स के पहिए होते हैं डिस्क शेप में होते हैं। या तो कुछ फैशन वाला कोई बच्चा होता है जो अपने पापा से बोलता है कि हमारे बाइक का जो पहिया है वो उसको डिस्क शेप में कर दो। नॉर्मली बाइक के पहिए डिस्क शेप में नहीं होते, लेकिन आप चाहो तो डिस्क शेप में अपने बाइक का पहिया बना सकते हो, बाइक मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क शेप में पहिए होते हैं, किसी भी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर mr²/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्क घूमने लगती है तो एज इफ, सचमुच में नहीं, एज इफ डिस्क का पूरा मास सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे कन्फाइन हो जाता है। वहां नहीं होता जहां डिस्क में मास होता है। डिस्क मास कहां कहां होता है? सेंटर पे, इधर उधर चारों तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन घूमते समय पूरा का पूरा डिस्क एक रिंग की तरह बिहेव करता है। ओके, क्या मान लो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। सारा का सारा पूरा डिस्क लो और उसको ऐसे ऐसे करके डिस्क को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो और उस मास को r/√2 पे रख दो एक्सिस से। उस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक्सिस के अबाउट, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्क। ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू वांट टू स्टॉप अ डिस्क। क्योंकि अगर किसी डिस्क का मास वहां कन्फाइंड है जहां मैं बता रहा हूं, तो वहीं रोकते हैं उसे, फोर्स वहां लगाएंगे जहां रोकना है। हम डिस्क को रोकने की कोशिश भी तो करते हैं। तो कई तरह की कोशिशें होती हैं डिस्क की। बेवकूफों वाली कोशिश, जहां से डिस्क रोटेट कर रहा है एक्सिस, एक्सिस पे रोकने की कोशिश करो, बिल्कुल बेवकूफ, जिसको कुछ नहीं आता समझ करो। फिजिक्स का मतलब पी भी नहीं आता उसे, क्योंकि एक्सिस पे कैसे रोक लेगा भाई? तो डिस्क, बहुत ज्यादा हीरो जो बनते हैं कहां चले गए? रिम पे। अब डिस्क घूम रहा है तेजी से, रिम पे छू के देखो। ठीक है, ठीक है, it's better to stop the disk and minimize the effort to a place where the whole mass of the disk is supposed to be concentrated, and this is what the mechanical engineering is all about when the machines are invented. Okay, maybe in second semester, first semester, if you do this, you might be taught that during the manufacture, people do take care of these things, where the brakes should be applied, where that touch should be done, where the delicate, things, if you want to stop it, if you want to rotate it, then obviously that effort always comes into play. You want to start rotating a body, effort will require. You want to stop a rotating body, effort will be required. Okay, so this of gyration will always help us. Let's now, if there is no perfect body, rigid body in the world, then how the following principles are made about rigid body? Which following principles? I want to know which principle is talking about. If there is no perfect body, तो समझ में आ गया. But which principle is talking about? Tell me the principle you're talking about, because probably this is very hypothetical question. I will love still to reply it. If there's no perfect body, then what principle he's talking about? I need to know that. Let's children move on in the meantime. Now, see quickly the moment of inertia जो मैंने यहाँ लिख रखा है. Just see it. If you feel that something you need to write, then only you write. Otherwise, just I will move on. I is mr square बता दिया. mk square. What is k? I follows, लिख लो इसे. I follows additive and subtractive rules. ये कितनी बड़ी बात है. अभी बताता हूँ कितनी बड़ी बात है. I follows additive and subtractive rules. ये भी लिख लो. I depends upon choice of AOR and distribution of mass around AOR. Choice of AOR and distribution of the mass around AOR. What is the meaning of these two things जो आपको मैंने अभी भी लिखवाया? I want to cover it first before I tell you the moment of inertia of other objects, जो कि आपको बुक में भी मिल जाएगा. List down. I am sure that आप में बहुतों को आता होगा. For example, let me ask, what is the moment of inertia of solid sphere? Come on, children. 2/5 हमारे square. About which axis? And don't reply as a fool. For a sphere, there is no sense of saying perpendicular. Passing to the center is more than sufficient.
There is no and. Say that there is no and, sir. Obviously, because every time you take an axis which passes from the center, axis remains same. It's a sphere. इस स्फीयर में जितनी बार सेंटर्स पास करोगे हर बार क्या होगा, डायमीटर होगा. हाँ, डिस्क होता तो कहना उचित था. ठीक है. इसी तरह से हॉलो स्फीयर का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, याद है? हॉलो स्फीयर, अच्छा यार, चलो मैं लिस्ट लेके आया हूं, बहुत सारे लाया हूं, बता दूंगा आपको. बट बिफोर आई गिव यू द लिस्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ सपोज I have to understand that moment of inertia follows the additive rule. What is the meaning of that? This is the best example to understand that what is the meaning of additive rule. Suppose, और ये कभी आया था एग्जाम में, suppose मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे ये कहा कि there is a disk and disk I have divided into many segments. All the segments are identical. ठीक है? कितने सेगमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सेगमेंट हो गए. ऑल द सेगमेंट्स आर इन दिस शेप एंड ऑल द सेगमेंट्स हैव दिस एक्सिस. Since all are identical, let every segment has mass m. What is the moment of inertia of this mass, each segment about this axis? पूछा जा चुका है भाई. आईटी जेई तो मुझे याद नहीं है, but I think somewhere it has been asked. It's such a simple question, but every time you see you know, I see the question, this question attempted by the children, they start thinking about something very big has been asked, as if what is the moment of inertia of this about this axis? What is this m when say this girl says m by 8 r square? What is this m? That is not given. A mass m is given. So नाइन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है बेटा, तो m by 9 कर दूं. 1 by 2 भी तो होगा. m square by 18, where what is m? Total mass. I think 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे उनमें से जो सही ऑप्शन था वो ये वाला ऑप्शन था, m square by 2. ये ऑप्शन सही ऑप्शन था. आप इस चक्कर में क्यों फंस रहे हो? मैंने तो मास दिया नहीं टोटल. अब आप कहोगे सर ये तो एक डिस्क का होता है. यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको इस एग्जांपल से, और यही मीनिंग है एडिटिव रूल का. सब लोग ध्यान से सुनना है इसके आगे वाले 2-3 लाइनें. ठीक है? एडिटिव रूल ये हमें सिखाता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक मास का किसी एक्सिस के अबाउट I1 है, किसी दूसरे मास का उसी एक्सिस के अबाउट I2 है, तो दोनों मास को कंबाइन करके अगर कोई मैं एक सिस्टम बनाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा? I1 प्लस I2. एडिटिव रूल सिंपल. ठीक है? नो नीड टू think about any other directional approach and all that. Okay, so every mass, this segment, they are going to add up, and the end of the day they will form the moment of inertia of what? Disk only. So if I keep writing 9 times, suppose ऐसे लिखूं मैं एक एक का, तो लास्ट में क्या लिखूंगा? 9m r square by 2, ये तो लिखूंगा. And what is 9m? ठीक है? इज इट ओके? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दिन ये क्वेश्चन आ गया कि एक डिस्क है, उसमें से इतना हिस्सा किसी ने काट कर निकाल दिया, जो काट कर निकाला उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? जल्दी बताओ जिसको आ गया हो समझ में. mr square by 2. समझ आया बच्चों? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. ठीक है? आई एम हैप्पी दैट यू हैव गॉट इट. दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलोज additive and subtractive rules. If you subtract something and precisely you know that what has been subtracted by you has MOE equal to whatever, then subtract that MOE from the original MOE, you get the remaining MOE of the body. ठीक है? Got it? समझ आ गया ना? Good. Now
sir, just turn a page. Note 2 or note 3, I think note 2 होगा. Yes, इसको घुमा दो. You can note down quickly the results as well as the diagram. You can ask me in case if you. All the diagram preliminary which I have made in the beginning, they are about the natural axis. But I will love if you keep analyzing in your mind that axis का नाम क्या है. कभी भी अगर दिमाग में आ रहा axis का नाम पूछूं तो बता सको आप. ठीक है, चलो लिख लो. पहला तो हो गया रिंग का, बता चुका हूं. डिस्क का भी बता चुका हूं. सिलेंडर के दो डायग्राम हैं, दोनों के एक्सिस का नाम आप लिखते जाओ, बताते जाओ. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सिस? हु विल टेल मी? इट्स अ hollow cylinder. What is the name of this axis? It's a natural axis, but what do you call? Perpendicular to the center तो है ही नहीं है. It is passing through the center, but not perpendicular to the center. Because center is a point, and there is no sense of saying perpendicular to a point. क्योंकि how many answers would be there? Infinite. एक point के infinite perpendicular होते हैं. I think the correct answer should be along the axis of the cylinder. How many axes of the cylinder? One, and that is the axis. Cylinder have only one axis. ठीक है? So about the axis of the cylinder, it is mr square. Don't you feel this is just like the ring? Which rule I am following here? Additive rule. ठीक है? Just like the bangles of a woman. ऐसे इतनी चूड़ियां होती हैं, ध्यान से देखो, शादी जिसकी नई नई होती है, और सारी चूड़ियों का जो बैंगल होता है पूरा सिलेंडर बन जाता है. मैं चाहूं तो एक एक चूड़ियां अलग कर दूं तो वो एक एक रिंग होगा और ये पूरा सिलेंडर हो गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे ऐड हो गए जो सिलेंडर बना रहे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिंग ही तो होगी. ठीक है, इसी तरीके से डिस्क को तुम एक के ऊपर एक रख के जैसे कैरम खेलते हो. ठीक है, शुरुआत में पूरा एक सॉलिड सिलेंडर होता है, उसके बाद उसे बिखेर देते हो. सो ऑब्वियसली जो डिस्क का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सॉलिड सिलेंडर का होगा. Fine. Moment of inertia of a sphere, you already told me 2/5 mr square. Spherical cell 2/3 mr square. All these are natural axes. About diameter. Now come to the lamina. लिख रहे हो ना? Okay, take your time. No problem. It's very important for you to understand the moment of inertia very well in this chapter. लैमिना तक आ गए? peer learning going on. आपने समझा इन्हें? अच्छा, क्या समझा? स्फेरिकल शेल. अगर कहीं स्फेयर लिखा हुआ एग्जाम में तो हमेशा सॉलिड लोगे. अगर कहीं सिलेंडर लिखा हुआ एग्जाम में हमेशा सॉलिड लोगे. अंडरस्टूड होता है. ठीक है, अगर हॉलो देना होगा तो वो लिखेंगे स्फेरिकल शेल. ठीक है, वो अंडरस्टूड नहीं होता. Lamina. Okay, it's a plain lamina. Lamina could be actually any two-dimensional body is a lamina. Okay, if it is a plain lamina of say length L and breadth B, then the moment of inertia about the axis passing from the center of the lamina and perpendicular to the plane of the lamina is m/12 L square plus B square. अभी बता दूंगा कैसे आता है. It's very simple to calculate. आप रिजल्ट नोट कर लो. When I will tell you the two theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, आप अपने आप को रिलेट कर लोगे. Now, what is the difference between rod and cylinder? Exactly. Dominating होती है लेंथ रॉड की. ठीक है, so रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो शायद इसके अबाउट नेग्लिजिबली स्मॉल होगी. जैसा आपने कहा, अगर रेडियस नेग्लिजिबल है तो mr स्क्वायर भी नेग्लिजिबल ही होगा. ठीक है, लेकिन इसके अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 12.
ये सब होमवर्क है आपका, जितने भी रिजल्ट हैं सब डिराइव किए जा सकते हैं, बट ये मैथ्स का होमवर्क ज्यादा, फिजिक्स का कम, अगर कैलकुलेट कर चुके हो तो, टू बी ऑनेस्ट। किया है ना? नहीं, चलो करोगे, अब से लेके 12 तक आप बहुत कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, लॉट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग, कि चलो कभी खाली बैठे हो, प्रूव करते हैं कि 2/5 हमारे स्क्वायर आता कैसे, ठीक है। हल्का सा हिंट दूं, किसी भी सॉलिड स्फीयर को तुम अज्यूम कर सकते हो टू बी मेड अप ऑफ सो मेनी वेरिएबल रेडियस डिस्क, ठीक है। अगर हम कतरा कतरा, जैसे नींबू नहीं काटते चाकू से, तो अगर हम कतरा कतरा काट कर स्फीयर को अलग करेंगे तो छोटे छोटे डिस्क ही तो बनेंगे। तो किसी एक डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो इंटीग्रेट करके पूरे स्फीयर का निकल आएगा। इसी तरीके से किसी हॉलो स्फीयर को अज्यूम कर सकते हो टू बी मेड अप ऑफ सो मेनी स्फेरिकल, सॉरी सो मेनी रिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली अलग अलग रेडियस के रिंग होंगे, तो किसी एक रिंग का निकाल लिया तो पूरे का निकल आएगा, ठीक है। वो आप करते रहना, मैं नहीं करने वाला हूं इधर। नेक्स्ट, राइट सर्कुलर कोन सर, नेक्स्ट राइट सर्कुलर कोन 3/10 mr square, where m is the mass of the cone and r is the radius of the base of the cone. Fine. Next, ये होमवर्क है, ओके ये मैंने आपको इंसिडेंटली करा दिया। ये जो होमवर्क है मैंने बता दिया कि किसी भी रैंडम शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालो, क्योंकि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, वैल्यू आ सकती है, लेकिन वैल्यू कहां से आएगी? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इफ यू नो टॉर्क, इफ यू नो अल्फा, यू कैन फाइंड आई। Okay, but I'm sorry, there's no mathematical formula for such a random shape object. And if somebody tells you no formula, तो बताओ, तो क्या बताओगे? भैया जी mk square, बस। What is k there? Radius of gyration, and m is the mass of the body. Fine. Okay children, there are two theorems which will help us to find the moment of inertia of an object about any axis of your choice. The first theorem is known as parallel axis theorem. Take any object and suppose I wanted to find the moment of inertia about an axis which is r distance away from the another axis which is passing from the center of gravity. Call this as Ig, and I wanted to find about this axis, say I. The mass of the body is m. Should I repeat? Center of mass से जो axis pass कर रही है उसके about suppose moment of inertia Ig है, और हमें निकालना है किसी ऐसे axis के about जो कि इस axis के parallel हो और distance कितना हो, then I is given as Ig plus mr square. Understand it more than thinking about the proof. Proof is as it is going to be very simple. If you want to do the proof, it can easily be done. If I have to find Ig, then probably I have to use these list of knowledge जो अभी मैंने बताया, क्योंकि ज्यादातर केसेस मैंने जो बताया है वो it's going to be Ig only. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लैमिना का जो दे रखा है वो Ig ही होगा, ठीक है। बट कभी कभी बच्चों इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को बता रहा हूं कैसे अप्लाई करते हैं। मान लो एक डिस्क है और मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। पहले तो इस एक्सिस का नाम बताओ। टेंजेंशियल, बस, और कुछ? क्योंकि टेंजेंशियल तो मैं एवरी टेंजेंट पास टू द सर्कमफरेंस, टेंजेंशियल एंड लाइंग इन द प्लेन, क्योंकि एक टेंजेंट ये भी होता है, अगर ये डिस्क है तो ये भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है, वो वाला होगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो जो तुम कह रही हो वो ये होगा, ठीक है। डिस्क ये है, ठीक है। ऐसे से रिंग ले लो हाथ में, कोई छल्ला, और ऐसे से घुमाओ तो वो ये एक्सिस जो तुम कह रहे हो। और ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये वो एक्सिस जो राजा महाराजा के पास जो सिपाही खड़े रहते हैं और ऐसे ऐसे पंखे हिलाते रहते हैं, देखा होगा अशोका सीरियल में या कहीं ऐसे,
ठीक है, ये वाली एक्सिस। या फिर जब गर्मी होती है तो हम लोग ट्रेन में ऐसे पंखे करते हैं, तो वो एक्सिस हो गया। फाइन, इज इट ओके? ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आईजी क्या लो? इसका पैरेलल एक्सिस बताओ कौन सा होगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? दिस वन। बट ये तो मैंने आपको बताया नहीं। हमने जो डिस्क का बता रखा है वो तो ये बता रखा है, ये वाला। अगर ये मैं पूछता तो ये थ्योरम लगा के आप तुरंत निकाल लेते, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है तो कोई इतना आसान है। इसके अबाउट जो है वो आईजी, आईजी कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई 2, और डिस्टेंस कितना है दोनों में, इसलिए इसके अबाउट इस थ्योरम से क्या निकल गया? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस हाउ मच? 3/2। लेकिन यहां तुम फंस गए। इसका तो आईजी को ये कहना, आईजी को ये रिकॉग्निशन देना कि इट इज ऑलवेज द नेचुरल एक्सिस विल बी रॉन्ग। आईजी सिचुएशनल है, सिचुएशन। लेकिन आईजी की एक कंडीशन मस्ट है कि इट विल बी द एक्सिस व्हिच विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। वेदर इट विल बी अ नेचुरल एक्सिस और नॉट, दैट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, दिस इज नॉट द नेचुरल एक्सिस ऑफ द डिस्क, बट दिस इज आईजी। इस केस के लिए ये आईजी होगा। अब तो इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसके अबाउट निकाल लूं तब जाकर इसके अबाउट निकाल सकता हूं, इस थ्योरम को अप्लाई करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसके अबाउट कैसे निकालेगा भी दिखाता। दूसरा थ्योरम इसीलिए बना है क्योंकि कभी कभी दूसरे थ्योरम के बिना पहला थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले दूसरा थ्योरम अप्लाई करेंगे फिर पहला अप्लाई। कभी कभी सिचुएशन, ये सिचुएशन वैसे ही उसी में से एक था। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है किसी को पहले एक्सिस थ्योरम में? कहीं नोट कर लो। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी, 1D 2D 3D, applicable for all type of body. Before I tell you the other theorem, ये एक स्फीयर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? अबाउट टेंजेंट, इस थ्योरम का अप्लाई करके बताओ। रेडियस r है, मास m है। What is the moment of inertia about this? 2/5 plus, and therefore what is the answer? 7/5 mr square. ठीक है, you change the axis, moment of inertia will change. Body remains same, but movie will change. कौन सा ज्यादा है बेटा? 2/5 हमारे स्क्वायर ज्यादा है या 7/5 ज्यादा है? मास मैकेनिक्स में जब हमने पढ़ाया था, हमने तो नहीं पढ़ाया था, किसी और टीचर ने बताया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? मास इज द, डोंट यू फील मास इज द सिनोनिम ऑफ इनर्शिया? ऐसा कुछ था, बताया होगा आपने। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज द सिनोनिम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और द एनर्जी, ठीक है, और inertia of motion, whereas the mass is the synonym of the inertia of rest. That means if a body is massive, big, it will possess more inertia of rest. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि moment of inertia is a भाई of the mass. That means what the role mass plays in translational motion, the same role is played by the moment of inertia. तो जरा रोल रिकॉग्नाइज कर लें, अभी मजा आएगा आपको। कैसे? मास इज द मेजरमेंट ऑफ inertia of rest in translational motion, इसीलिए इसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा गया। ठीक है, कभी अगर आपसे कोई पूछे हुआ है इसका नाम इतना घुमा के क्यों रखा, कुछ आसान सा रख देते। तो मोमेंट आया रोटेशनल से, इनर्शिया चूंकि उसका भाई है, ठीक है, इसलिए मोमेंट, मोमेंट का मतलब हमेशा मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है, मूवमेंट चलना होता है, मोमेंट का मतलब रोटेशन होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, आता होगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इनर्शिया की जैसा रोल प्ले करता है। तो अब इनर्शिया वाला रोल क्या था वहां पर? जिसका मास ज्यादा होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव इट, एंड इफ इट ऑलरेडी मूविंग, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। वहां लीनियर मोशन में, यहां इफ अ बॉडी हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी डिफिकल्ट टू रोटेट इट, एंड इफ इट इज समहाउ रोटेटिंग, डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। ठीक है, अब आपको बताते हैं ओलंपिक वाले साइकिल में डिस्क क्यों रखा जाता है, हमारे आपके साइकिल जैसा क्यों नहीं रखते?
मेडल जीतना है, एक तो पहली बात मेडल जीतना, वहां हम शकल दिखाने तो गए नहीं कि गिरा के आ गए फिर पट्टी बांध रहे हैं वहां खड़े होकर रिंग पे, नहीं। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है रिंग से, अगर उतना ही मास लो उतना ही रेडियस लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की क्या होगी, हमारी स्क्वायर, और डिस्क की क्या होगी। तो अगर किसी चीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है इसका मतलब इट इज इजी टू, वही तो चाहिए। आप ऐसी साइकिल दे दोगे क्या किसी को कि वो घंटे बेचारा 1 घंटे तक वो चलाने का प्रयास चल ही नहीं रहा है, तब तक तो बाकी लोग तो उधर चले जाएंगे। उसको जल्दी चलाओ, जल्दी, और इट शुड बी इजी टू स्टॉप ऑल्सो। ठीक है। अब आओगे सर अगर इतनी अच्छी बात है तो फिर जितनी साइकिल बनाने वाली कंपनियां हैं वो सारी साइकिल ऐसी मार्केट में कि हम लोगों को भी तो वही चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली इसका आंसर बड़ा वेग सा होगा, मैं अपना आंसर दे देता हूँ, किताबों में तो चीज लिखनी होती। मैं नहीं चाहता कि आए दिन बच्चे गिरते रहे, क्योंकि साइकिल आपको याद होगा जब पहली बार आप साइकिल चलाना सीखा था आपने, बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब हवा से जैसे साइकिल मिली नहीं कि मन करता चले यार हवा से बात करते हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड देन द लेटर ऑन रिजल्ट इज ऑब्वियसली नॉट इन योर फेवर। फाइन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका जितना ज्यादा, पार्क के अंदर जो गेट बनते हैं वो बीच में लगा होता है और एक आदमी इधर से घुसता है एक उधर से बाहर निकल जाता है। किसी भी दरवाजे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया घरों में जो हम लोग लगाते हैं वो ज्यादा होती है जब उसको किसी एक एंड से फिक्स करते हैं। अगर वही दरवाजा ऐसा लगे जैसे मॉल्स में लगते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो। पार्क वाला तो समझ में आता है, हम नहीं चाहते कि लोग पार्क में गए हुए तो वो उसको घुमाने में अपनी सारी एनर्जी खर्च करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इधर से घुसे एक इधर से बाहर निकल जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम से कम रखो उतना अच्छा है। ठीक है, देयर कुड बी अदर सो मेनी एग्जांपल्स प्रैक्टिकली यू कैन लिंक ऑफ। लेट्स मूव ऑन। अब अनदर थ्योरम कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नोट कर लो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2-dimensional body. This is very important for you to understand. This is not valid for 3D. ठीक है, this is only for the 2-dimensional body. ये यहां बैठने के लिए रखा क्या? बैठता कौन है? Suppose we have a 2-dimensional object, 2D, mind it. It could be as plain as this board. Okay, and I have to find the moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane and passing from a point which happens to be intersection point of two mutually perpendicular axes. Should I repeat myself? Suppose this axis is y axis, this axis is x axis, and this axis is z axis. And if I have to recognize x and y axis, please recognize like this: x and y axis are the axis lying in the plane of the body. मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं इसे किसी दिन z कहता हूँ, इसको किसी दिन y कहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये x बन जाएगा। ठीक है, हमें z और y को कुछ इस तरह से रिकॉग्नाइज करके ये थ्योरम लिखना है कि जो प्लेन में एक्सिस होंगी उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी प्लेन में है अगर उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो जो प्लेन में नहीं है एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? Ix प्लस Iy। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, लिखो मत, आपके बोर्ड सिलेबस में है, सिर्फ ये लिख लो बस, Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, is equal to the sum of the moment of inertia of the same body about two mutually perpendicular axes which are lying in the plane. See how easily now this problem can be solved. मुझे इसके अबाउट निकालना है, ये डिस्क है, अगर मैं इसके अबाउट निकाल लूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। इसके अबाउट निकालने के लिए मैं दो एक्सिस और सोचता हूं, एक ये और एक ये वाली, समझ आया सबको? ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस भी एक डायमीटर है, एक्स भी एक डायमीटर है। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आएगा वही अबाउट एक्स एक्सिस भी होगा इंसिडेंटली, क्योंकि डायमीटर तो डायमीटर।
इसका मतलब मैं इस थ्योरम से ये IZ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2I डायमीटर। एंड I डायमीटर हम लोग किसी डिस्क का निकाल चुके हैं, mr²/2 बताया था ना, डिस्क के इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, दैट मींस I डायमीटर पता है हम लोगों को। इसको यहां डालो, ओके, सो IZ विल बी mr²/2 which is equal to twice ID and therefore नहीं I diameter नहीं, IZ ये पता है, सॉरी IZ मालूम है mr²/2 and therefore I diameter will be what, mr²/4. Got it? Now if I know mr²/4 about this axis, applying the parallel axis theorem, इसके about क्या निकलेगा बताओ, I will be equal to IG plus mr², and what is IG, mr²/4 plus mr² which is 5/4 mr². ठीक है, चलिए let's find moment of inertia of some of the objects using these two theorems. I'm just giving you here, you try to find out and apply. Find MOE of following rigid objects. एक रॉड है, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट निकालना है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। आप दो चीजें बताओगे, एक तो मुझे जोर से बताओगे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, और ऑब्वियसली द रिजल्ट। विच थ्योरम, अब रिजल्ट बताओ, निकाल के जल्दी से रिजल्ट बताओ। पीछे पलट के आप वो रिजल्ट, या ये लिखा हुआ ऑलरेडी, जो रिजल्ट आपको चाहिए आपने नोट कर रखा है, वो वहां से कॉपी कर सकते हो। है? वो तो इसके अबाउट है, ये बताया था मैंने, चेक करो, ml²/12 इसके अबाउट था, ये IG हो जाएगा इस समय। नो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सिंपल एडिशन में गलती कर रहे हो, कम ऑन। इतनी जल्दी भी नहीं है जितनी जल्दी लग रही है, आराम से करो। एग्जैक्टली आराम से करो, आएगा। हाँ जी बेटा, कैसे आया, I will be equal to IG plus mr², बताओ यहाँ R क्या लोगे, वेरी गुड, तो क्या हो गया ये ml²/12 प्लस ml²/4, कितना आ गया, ml²/3। आ गया सबको समझ में, ठीक है। इसका मतलब वो बेसिक्स जो बताया था वो काम आएगा, उसको रट लो सारे, क्योंकि वो हर अक्सर तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट दो थ्योरम भले ही आप जान लो, लेकिन जब तक वो बेसिक्स नहीं पता होगा तब तक आप थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। एक और केस लेता हूं, एक अनदर केस, कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा यहां पर, there is a lamina and you have to find the moment of inertia about one of the corner. Mass of the lamina is m, length is l, and breadth is b. Which theorem? Some of you are saying perpendicular.
Parallel, if you know IG, probably parallel acceleration will suffice. IG आपको पता है, बता चुका हूँ. IG चेक करो पीछे, वो देखो बोर्ड में अभी भी बना हुआ है. ठंडा बहुत है. आ गया? कितना आया बेटा? ML स्क्वायर प्लस बाई, शाबाश. करो. IG वही होगा जो आपने लिखा है, प्लस MR स्क्वायर. पहले R निकालो, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस निकालो. सिंपल ज्योमेट्री. याद करो वो दिन जब कभी छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, 8th में पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई चीज पढ़ी थी, डायगोनल वगैरह सीखा था. आ गया? कितने लोग आया? रेज योर हैंड्स. 50% भी नहीं है. दो हाथ उठा रहे हो ताकि नंबर बढ़ जाए, है दोस्त. तो ऐसा. यस बेटे. ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर इसको मैं R मान लूं, R कितना होगा बोलो? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट बाई 2. ठीक है, अब अप्लाई कर दो. इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG ले लूं तो I क्या होगा? IG प्लस MR स्क्वायर. IG क्या है? M/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर. इसका स्क्वायर कर दो. L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 4. सॉल्व करना, किया जाएगा. Come on, try this. Suppose there is a rod and हनुमान जी वाला गधा बना दिया मैंने. एक स्फेयर चेप दिया एक एंड पे. लेंथ इसकी L है और स्फेयर का डाया L है. ठीक है, दोनों का मास सेम है. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. घूमेगा नहीं घूमेगा इसके अबाउट? मना तो नहीं करेगा नहीं इसके अबाउट नहीं घूमना है? घूमेगा. कहीं भी घुमाओगे चीजें घूमती. ठीक है, अगर इसके बाद घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर होगी. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी एडिटिव रूल फॉलो करेगी. इसका मतलब अगर इंडिविजुअली दोनों का हमें पता चल जाए इस एक्सिस के बाद तो कितना आसान काम है. ऐड देम. वही करना आपको. इंडिविजुअली निकाल लो, ऐड कर दो. यूज बेसिक फॉर्मूले भी लग सकते हैं, थ्योरम भी लग सकता है, सब कुछ इसीलिए तो बताया था. If anybody is able to do before my kids do, then please tell me the answer online if you are listening me. I am waiting. Answer of this question. Whosoever gives you, please let me know. Yes, beta. How much? 14 by 13 by 12 ml square. I don't know. It could be totally wrong.
if she is right, then you are wrong. What is beta? What you said? 34 ml square by 16 या 60. अरे बाप रे, इसको कैंसिल कर सकता हूँ. 17 30 17/30 ml स्क्वायर. एनीवे फिगर से हमें कोई घबराहट नहीं हो रही है. हमें कौन सा पेमेंट करना है किसी को, ठीक है, कुछ भी आ जाए यहाँ, बट लॉजिकली जो आ रहा है वो सही होना चाहिए. दोनों लोगों का सही नहीं हो सकता है एक साथ, तो आपका गलत है या उनका गलत है. अब जरा अपने सपोर्ट में लोगों को इकट्ठा करिए. आपका गलत अपने आप ही बोल रही हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है. इंट्रोस्पेक्शन बिगिंस. बट ये कहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गलत है, ये भी बताओ कि सही क्या है फिर. ऑनलाइन हेलो, nobody. If you are listening, let me know the answer. I'm very eager to know that which center gives me the answer. कुछ तो बोलो भाई मेरे लिए इतना. Okay, yes, next. Anybody else? कितना बेटा? अब तो हद ही हो गई. तीसरा आंसर 59 ml स्क्वायर बाई 60. कितने लोगों का आ रहा है ये? 1 2 3. इतना खुश मत हो, 3 लोगों का मिलके भी गलत हो सकता है. 3 गलत भी हो सकता है. ये देखो 41/60. Okay, no answer from online, so I'm doing it now. आ गया? Yes, yes. अच्छा, it's a question ना. 26/15. Okay. एक आंसर ऑनलाइन भी मिला है. कितना है सर? 26/15 ml स्क्वायर. विच सेंटर? विच सेंटर? क्या पता यही सही हो. इन सभी की अभी बोलती बंद हो जाएगी, देखना. ओके, लेट मी सी. वन मोर आंसर. सेम. अच्छा, 59 वो तो खैर इनका. किसका है 59/60? देखो ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें. अच्छा, नहीं उन्होंने किया होगा यार. लेट्स बिलीव. ओके जी, एडिटिव रूल फॉलो करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो रॉड की I1 है या I रॉड, इसकी I स्फीयर. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I रॉड प्लस. नाउ I रॉड ओके ml स्क्वायर बाई 3. वेरी गुड. I स्फीयर is it not a tangent of the sphere? If it is a tangent of the sphere, then apply theorem. Perpendicular or parallel? Parallel axis. That says that Ig, that is 2/5 ml square by 4. समझ आया? Because radius is L/2 plus ml square नहीं, अच्छा L/2 ml square by 4. ठीक है. Add it 7/20 ml square, and therefore what is I? कितना आ रहा फिर? कितना आ रहा बताओ? 41/. ठीक है. ओके, गुड. कभी भी ऐसे कोई बिग डील नहीं होगी आपके लिए. प्लीज करना भी मत. मुझे लगेगा कि हमने कुछ आज समझाया आपको. जब यहाँ कोई स्पेयर चेप दिया, ठीक है, सोचा कि आप फंसे नहीं, आप कहीं भी चेपने दो, उसको सिर्फ बोलो, आप ललकारो कि कहाँ लगाना, बताओ कौन सी चीज. बस आपको पता क्या होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लगाई जा रही, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, उसके बाद ऐड कर दो. ठीक है, ऐसे कोई चीज काट कर निकाल दे, कोई टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, पूछो कि जो चीज काट कर निकाली उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या है, तो बची हुई का क्या होगा. फाइन, इज इट ओके?
सर 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 जस्ट टर्न अ पेज, एक बच्चों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3 या नोट 3। टर्न इट। ये सब तो हमने बता ही दिया, एक दो चीजें जो नहीं बताई वो आप लिख लो। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन यू आल्सो, बट आई वांट दैट यू प्लीज राइट इट सो दैट इट गोज एज अ नोट। यहां से शुरू करो, ये तो बता चुका हूं। व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ सिलेंडर and you have to find the moment of inertia, hollow cylinder, moment of inertia about this axis. I want first of all you name this axis. What is this axis? Hollow cylinder के लिए what do you call this axis? Huh? Normal what? Normal to what? Normal to the cylinder? Perpendicular to the axis, there are n number of such axes, because if this is cylinder, even this is perpendicular to the axis, this is also, this is also, this is also. So what is this specific about? Passing from the center. So perpendicular to the axis of the cylinder and passing from the center. And the moment of inertia to note down is ml square by 12 plus mr square by 4. सॉरी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है इसलिए हॉलो सिलेंडर में आप रिंग की तरह लोगे और इसलिए वो रिंग वाला पोर्शन यहाँ ऐड हो रहा है। प्रूव कैसे करना है, इट इज नेवर बीन अ कंसर्न फॉर इवन आईटी जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट यस एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ लवली मैथमेटिकल एक्सरसाइज। व्हेनेवर यू गेट टाइम प्लीज डू इट। ठीक है, आई कैन गिव यू हिंट हियर आल्सो, कर लेना। मान लो इसका मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, आई विल गो एट डिस्टेंस x एंड कंसीडर a small strip. I will assume that as if the cylinder is made up of so many small rings. So one such ring, if I consider and find the moment of inertia as di about this axis, then integrating that, I can get the moment of inertia of the whole. ये आपके लिए एक रिडल है, चाहे जो मान लो मैथ्स अगर करना है तो ऑब्वियसली आपको करना आना चाहिए। जैसे मैं सॉलिड से हॉलो से सॉलिड आता हूं, ठीक है, ये हॉलो था, सॉलिड सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा क्योंकि सॉलिड के केस में ये डिस्क हो जाएगा। So ml square by 12 plus mr square by 4. ठीक है, इसको कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एक्सिस? कौन सी एक्सिस है ये? टेंजेंशियल टू द सिलेंडर, ओके, पासिंग थ्रू everything which passes through the surface happens to be tangential. Will it not be a तो बोर्ड खराब हो जाएगा मैं तो करने ही जा रहा था। Will it not be a tangential axis? Even this axis is tangential, and that is why I am particular about this. बताओ मुझे कि ये क्या है, कौन सी एक्सिस है ये? टेंजेंशियल तो है ये, parallel to the axis which is perpendicular to the axis of the cylinder and passing from the center of mass. इसके पहले वाला जो एक्सिस था, घबराओ मत, बोलना पड़ेगा, इतना रिकॉग्निशन इतना आसान नहीं होता, नाम लंबे कभी कभी हो जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मुझे इसके बाद निकालना हुआ तो कौन सी थ्योरम लगाऊंगा? इसके बाद पता चल जाए, निकल आएगा। इसके बाद अभी आपने निकाल लिया था तो इसके बाद निकाल लोगे। पता है अगर इसके बाद निकालना होगा तो कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? अभी भी मैं वही थ्योरम लगा सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए क्या होगा? इसी की वे आउट निकाल लूं, मुझे डिस्टेंस दे दो बस। ठीक है, फाइन, डिस्टेंस दिया होगा, क्योंकि रैंडम तो नहीं होती बीच चीजें। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगी तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है, और वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन के दौरान वो डिस्प्ले होता है, तो रैंडम कुछ नहीं होगा, जरूर कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। सर ऊपर ले जाना, ये आपके
घरों में जो फ्रिज रखा होता है, फ्रिज का बेस कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ, ये फॉर अ चेंज मैंने स्फेयर्स ले लिया 4 और 4 रॉड ले लिए, चारों रॉड और स्फेयर को ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप यहां करो क्योंकि बहुत टाइम लोगे आप, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि आप डायग्राम बना लो और डेटा नोट कर लो, आंसर कल करके आना। मासेस m ले लो सभी के, स्फेयर के भी मास m और रॉड का भी मास m। लेंथ हर रॉड का 2r और नेचुरली स्फेयर का डायमीटर भी 2r, दैट मींस रेडियस ऑफ द स्फेयर इज r। ये तुम्हारा AOR है, ये बीच में, ये इसके बाउंड निकालना है, ठीक है। डायग्राम बना लिया। सर आंसर मत दिखाना, बस यहीं तक, नीचे मत जाना। नहीं नहीं, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। गुड। नो, वो तो मैंने XY ले लिया, वो मैंने सेंटर से वो सेंटर ऑफ मतलब AOR से स्फेयर के सेंटर का मैंने X ले लिया है और रॉड का सेंटर Y ले लिया है। वो आपको भी लेना पड़ेगा, बिना उसके निकल नहीं पाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से घर जाके कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। राइट इन द मॉर्निंग बिफोर वी बिगिन द क्लास टुमारो, आई वांट दिस आंसर। Now we have almost completed the knowledge of moment of inertia. Torque, as it is two formula which everybody knows, torque is R cross F, and this girl in the beginning told me, which is very important to know, that it is also equal to the force and perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force. ठीक है, torque हो गया, I आ गया। अब हम लोग questions कर सकते हैं, ठीक है। We can start applying it to the different problems which involve the rotational dynamics. But before I do that, I would like to tell you little basics of the rotational dynamics, what you call. Translational dynamics is very simple. By now we have done so many free body diagram and so many force and friction relations and equations. Let's see if there is a situation where a body is rotating, and I will not mix up in the beginning. I will try to purely rotate the body, but naturally there could be khichdi between the rotational motion and translational motion. For example, if I place a pen and hit, okay, it does rotation as well as translation. The wheels on the road of all the vehicle, they perform translational as well as rotational motion. ठीक है, नेचर में ज्यादातर केसेस में एग्जांपल कंबाइन का ही होता है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन टुगेदर। ऐसे मोशन को हम रोलिंग कहते हैं, ठीक है। इसको रोलिंग नहीं कहते, लेकिन ये भी ट्रांसलेशन और रोटेशन का एग्जांपल है। लेकिन शुरू में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पे कन्फाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रोटेशन के रोटेशनल डायनेमिक्स के एलिमेंट्स लिख डालूं फटाफट, जो एलिमेंट्स मतलब वो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेस पे पूरी डायनेमिक्स आपको करनी आनी चाहिए, वो होगी सबसे पहले नेट टॉर्क। बताओ वहां क्या होता था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। गॉट इट, आई अल्फा, समझ आ गया। नाउ रिमेंबर दैट टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है। मैं अक्सर सोचता था कि दोनों फॉर्मूले अगर सेम है तो दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करने में इतना डिफरेंस क्यों। जब मुझे समझ में आया कि ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं हो सकता और ये किसी और जगह के लिए बना हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। इन दोनों फॉर्मूले को सेम होने के बावजूद भी आप कहां कहां प्रोहिबिटेड होता है, उसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। टेक एन एग्जांपल। सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and while I'm moving, I'm trying to look a point, okay, which is fixed. And if I continue to move in a straight line, let me tell you, if I keep looking that point, I'm actually not moving, I'm rotating. If you want, you can feel it. When I don't look that point, and if I move straight and look in the straight direction, I will always be translating because my displacement is a single direction. But when I keep looking that point and keep moving in a line, then probably I'm not
translating for me as if I'm rotating. And if I'm not rotating, at least that point is rotating. ध्यान से देखो, पहले वो यहां था, जब मैं यहां आ गया तो कुछ एंगल मूव हुआ, इसी को तो रोटेशन कहते हैं. ठीक है, और आगे जाओगे थोड़ा और एंगल मूव करेगा वो पॉइंट, तो रोटेशन यहां भी हो रहा है. ऑब्वियसली आर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम. मैं यहां रहूं, चाहे यहां रहूं, चाहे यहां रहूं, उस पॉइंट से जो मेरे लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है. ठीक है, इसका क्लियर हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट मास जिसकी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, कम ऑन, किसी पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने तो सिखाया नहीं, क्योंकि उसका आर कहां से ढूंढोगे, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से. लेकिन अगर उसके पॉइंट मास की एक्सिस अगर हम वहीं से ले लें, वो नहीं होगी ना. एक स्फीयर का 2/5 mr² हो सकता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम सकता है. लेकिन एक पॉइंट मास अगर अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती नहीं है, जीरो होती है. लेकिन उससे हटकर बाहर कोई एक्सिस हो सकती है जिसके अबाउट वो घूम रही है. ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ. जिस बच्चे को भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया अब तक, वो हंसेगा मेरी बात सुन के, बोले क्या मजाक कर रहे हो सर, क्योंकि आईजी कहां से लाओगे. समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आईजी पता होता तो निकाल लेते आप. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बना उसी लिए. एक पॉइंट मास का अपने खुद की एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती नहीं है, दूसरी एक्सिस के बाद होती है बाहर वाली. पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन रोटेशन तो हो रहा है. ठीक है, और रोटेशन हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे. अब हमको आपको समझना होगा कि जब हम यहां निकाल नहीं पा रहे हैं तो कोई तो अल्टरनेट होगा, कोई तो अल्टरनेट होगा टॉर्क निकालने का. ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड टॉर्क बाय आर क्रॉस एफ. नाउ वेरी ऑनेस्टली, इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, it is actually having a velocity v, say mass m, ठीक है, say momentum p, let the distance be d, perpendicular distance, let at a time when you are interested the distance be r, let the angle which you have gone be theta. Okay, fine. Now all those formula जो आपने कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ रखा है, they will indicate towards the same result that torque is equal to force into perpendicular distance, angular momentum is equal to linear momentum into perpendicular. देखो कैसे, यहां अगर मैं था तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता, mv into d, यही तो होता. यहां पर वेलोसिटी देखो ये v है, मोमेंटम क्या होगा mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d. जब मैं यहां आ गया तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, r क्रॉस p. इसको ओपन करो, r p sin थीटा. What is r sin theta? And therefore what is this? इसका मतलब ये बॉडी कहीं भी चली जाए, इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट सेम रहेगा. ठीक है, पॉइंट आपने फिक्स कर दिया. वो लीनियर, इट इज अ लीनियर मोशन, बट व्हेनेवर आई वांट I can convert this linear motion as if there is a angular motion about my choice of point. ठीक है, इस कंसेप्ट का बहुत ही बारीकी से जब आप स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे बहुत से केसेस में आपको इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे जंप करना आना चाहिए, इससे इससे और इससे इससे. मैं आपको अभी सिखाता हूं टॉर्क कैसे निकालेंगे. सपोज करो मुझे टॉर्क निकालना होता, एक फोर्स इधर लग रहा है, लीनियर फोर्स इधर लगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके अबाउट, ये d है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, यहां क्या होगा टॉर्क fd. मान लो मैं थीटा डिस्टेंस और आगे चला गया, फोर्स वही है अभी भी, थीटा डिस्टेंस और आगे आ गया, ये r हो गया. व्हाट विल बी टॉर्क हियर, बोलो r क्रॉस f. करके देखना, ये भी कितना आएगा fd. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एज लॉन्ग एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स रिमेन सेम, कहीं फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, और एज लॉन्ग एज द चॉइस ऑफ द पॉइंट रिमेन सेम, जिसके अबाउट सो कॉल्ड टॉर्क निकालना है, हो रहा है नहीं हो रहा है तुम्हारा हेडेक नहीं, हो सकता है रोटेशन हो ही नहीं रहा हो, मैं बार बार कह रहा हूं लीनियर मोशन हो रहा है, लेकिन जस्ट यू फिक्स द पॉइंट, देयरफॉर फॉर यू इट इज नाउ गोइंग टू अपीयर एज इफ देयर इज अ रोटेशनल मोशन.
एंड देयरफॉर टॉर्क निकालना आपकी मजबूरी हो सकती है। आई कहां से लाओगे ऐसे सिचुएशन में? ठीक है, जहां आई ले आ ही नहीं सकते वहां टॉर्क कैसे निकालोगे? आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो टॉर्क जब भी कभी आई में तुम्हारा हाथ तंग हो, जब परेशान हो आप आई के लेके, तो टॉर्क को तुरंत आप कैसे निकालो? आर क्रॉस एफ से। जब भी कभी एंगुलर मोमेंटम निकालने में परेशान हो रहे हो क्योंकि आई नहीं पता, ओमेगा नहीं, कुछ परेशानी सी है, प्लीज अप्लाई आर क्रॉस पी। ठीक है, इफ इट इज वेल नोन सिस्टम ऑफ वेल नोन डिफाइंड आई, then obviously torque is I alpha. ठीक है, now there will be situation where you have to jump from one platform to another. Remember once I took a class in this room only and I told you how to jump from if to nif and nif to if. वैसे कुछ मैं आज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ये टेबल है, राउंड टेबल है। इस टेबल पे मैं सर्कस दिखाने वाला हूं और दौड़कर आता हूं और इस टेबल पे जंप कर जाता हूं, और टेबल घूम सकता है। पहले नहीं घूम रहा था, और नेचुरली अगर ये घूम सकता है और मैं दौड़ कर आके जंप करूंगा तो आपको सबको बताओ क्या होने वाला है? द टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग। अच्छा, गिरने वाला है ऐसे, इसलिए ऐसे तो हंसोगे नहीं, घूमने वाला। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं गिरूंगा नहीं, मैं समझ जाऊं। तो व्हेन आई जंप, आई बिकम द पार्ट ऑफ द टेबल एंड देयरफॉर द टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद मी। सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेबल प्लस मी एज अ सिस्टम, यू कैन फाइंड एडिटिव थ्योरम लगा के मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेबल की ऐड करके निकाल लोगे। अब इस प्रोसेस में कहीं से भी एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। कोलिजन में कभी भी एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क नहीं लगता, पता होगा सर ने आपको। ठीक है, जब भी कभी कोलिजन होता है, फ्री कोलिजन, ना तो एक्सटर्नल, सब इंटरनल होता है। एवरी एक्शन इज इक्वल, लिया दिया सब बराबर हो जाता है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल वो नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जैसे लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व होता, वैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करें? सवाल ये उठता है कि पहले कूदने के पहले क्या मेरे पास कोई एंगुलर मोमेंटम था? अगर मुझे एक पॉइंट मास की तरह लोगे और मेरे वेलोसिटी को मेरे मास से मल्टीप्लाई करोगे तो बार बार आपको mv मिलेगा, विच इज लीनियर मोमेंटम। कहां है एंगुलर मोमेंटम? अब अगर नहीं था तो फिर आफ्टर जंप जनरेट कहां से हुआ? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, यू आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब आपको सीखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब दौड़ रहा था तो हो सकता है दौड़ते समय मैं उस एक्सिस को देखकर अगर दौड़ूं जिस एक्सिस के बाद में रोटेशन होना है, तो दौड़ते समय भी मेरे मास का एक एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला? आर क्रॉस पी। माना कि आई नहीं है, कोई बात नहीं, आई निकल भी नहीं सकता, वहां आई निकल सकता, यहां नहीं निकल सकता मेरे केस में, क्योंकि मैं एक पॉइंट मास हो सकता हूं। ठीक है, बट मेरा मोमेंटम तो निकाल सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस लाइन ऑफ मोशन का डिस्टेंस जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कोलिजन जंप करने के पहले एंगुलर मोमेंटम निकल गया। कौन से फार्मूले से? आर क्रॉस पी से। जंप करने के बाद व्हेन आई बिकम द पार्ट ऑफ द टेबल, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चंस पता कैसे आते हैं एग्जाम में? देयर वाज अ मैन हु वाज रनिंग एंड देयर इज अ बॉल was being thrown by one man and another man was standing at the rim of the table. He catches the ball. Earlier the table and the man they were at rest. Find the angular velocity when he caught the ball. अब ओमेगा कैसे निकालोगे? Naturally when the ball was thrown, ball must have some mass and ball must have some velocity. So what I will do, I will calculate the angular momentum of the ball before it was caught, addressing the point about which the rotation is going to take place later on. निकाल लिया? Now the man has caught the ball, and then I will calculate the combined MOE. Combined MOE into omega is equal to angular momentum before the ball was caught. Omega. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? That means we need to understand the jump process from R cross P to this I omega and R cross F to I alpha. ठीक है? Is it okay? Let's do a problem, children, where अच्छा पहला एलिमेंट बता दिया मैंने, नेट टॉर्क। दूसरा एलिमेंट ऑफ डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, पहला था नेट टॉर्क। क्या लिखा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इधर R क्रॉस F।
दूसरा एलिमेंट रोटेशनल डायनेमिक्स का, if tau external is 0 then L will be constant. Got it? What is the meaning of this? You can say this is the law of conservation of angular momentum, locom, short form. Locom is similar to LOC, law of conservation of linear momentum, which tells that if there is no external force acting, the linear momentum remains conserved. Now this tells us that if there is no external torque acting, the angular momentum will remain conserved. तीसरा जो एलिमेंट है रोटेशन डायनेमिक्स का वो ये, all these equations which we have done, they can be applied with the change notation. But please be careful that when you are applying these equations, I think you know this, when you're applying these equations, you are applying only for the cases where alpha is constant. And if alpha is constant, what is constant? Torque is constant. Do not apply these equations where torque is variable. Do not apply these equations where torque is variable. All right. 5 minutes more. Otherwise, I will not be happy. Eh? Whatever knowledge I have given you, let me see how it prevails. Suppose there is a pulley and there are two masses. The pulley has mass m and radius r. These two are masses m1 and m2. Find the acceleration of m1 और m2. दोनों का सेम होगा. Find the acceleration of m1 and m2. मुझे आप सिर्फ ये बताओगे, 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में, कि अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन होता, जब हमने पुली किया था, मासलेस पुली था, तब हम कैसे करते? यहाँ टेंशन टी लेते, यहाँ भी टी लेते, यहाँ भी टी लेते, यहाँ भी टी लेते, एक को ऊपर ले जाते, एक को नीचे, इक्वेशन ऑफ मोशन करते, सॉल्व हो जाता. ठीक है. अब आप नहीं कर सकते ऐसा. अब टेंशन अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि अगर टेंशन, कौन बताएगा टेंशन अलग अलग क्यों होगा? अगर टेंशन सेम हो गया तो रोटेशन कैसे होगा? क्योंकि अगर दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली एक का टॉर्क दूसरे के टॉर्क के बैलेंस हो गया. इसका दोनों का टेंशन अलग. मान लो यहाँ टेंशन T1 है, यहां पर T2 है. Let this goes up with action A. Let this comes down with action A. Fine. ट्रांसलेशन अभी भी हो रहा है इसका. इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा? मैं जहां ट्रांसलेशनल लिखना होगा वहां मैं TD लिखूंगा. TD मींस ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स. जल्दी बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? इट्स गोइंग अप. बोलो. कम ऑन. T1 माइनस इज इक्वल टू, शाबाश, ऐसे शाबाशी दे जा रहा हूं, सारा मैं बता रहा हूं. ये इसका बताओ, ये नीचे जा रहा है, इसका बोलो. RD, rotational dynamics. What is rotating? Pulley. Most of the pulleys are disc. Okay, most of the pulley. If it is given cylinder, then you will take cylinder. अभी I लेके कर रहा हूँ. बताओ इसका, it's rotating. So net torque. What is net torque? कौन सा torque ज्यादा होगा? The torque by T1 or the torque by T2? So T2R, force into perpendicular distance, minus T1R is equal to I alpha. Got it? ठीक है. R क्रॉस F नहीं लगा रहा हूं, नहीं लगाऊंगा यहां. क्यों? क्योंकि मुझे साक्षात दिख रहा है कोई चीज रोटेशन में जिसकी I मुझे पता है, इसलिए R क्रॉस F नहीं लगाऊंगा यहां पर. फाइन. T2 माइनस T1 is equal to I alpha by R, is I alpha by R, equation 3. ठीक है children, there are 3 variables here, T1, T2 and alpha, and 3 equations you can solve.
We are going to continue this tomorrow, particularly with the angular momentum and rolling, and then questions. Okay. Thank you very much.